हेलो हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है, कैसे भाई? एंड थैंक्स फॉर द मेंबरशिप। आरिगातो फॉर द मेंबरशिप। हेलो भैया भाई, कैसे हो? हेलो के भाई, क्या हाल है? लुक निकाला? अरे ये क्या है? Luuk texted me to go over the exostrider plan at the infirmary. Better get going. ओके 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 ओके। कैसे कैसे कोपियम आईडीज आते हैं आजकल? कोपियम आईडीज आते हैं किस चीज़ का? गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। भाई वैसे मैं स्ट्रीम करने आया तो हूँ, बस करूँगा क्या? लुक तो निकालूंगा नहीं। What am I supposed to do? 100 एस्ट्राइड मिलेगा। भाई मजाक कर रहे हैं ये लोग। क्या है 100 एस्ट्राइड रिवॉर्ड है ये? 100 एक एक पुल भी नहीं है। क्या करना क्या है इस वाले इवेंट में? पता नहीं क्या है वो। वेल ट्राई लेते हैं इसका, देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड डैम, एब्स देखो भाई, एब्स। एब्स, माय गॉड डैम। लेट्स ट्राई। लूक हर्सन, स्टोरी करो और भाग जाओ। आगे स्टोरी करके जाऊंगा मैं भी, और करने के लिए है भी नहीं। इसको तो मैं निकालने वाला नहीं, और अगर टेस्ट भी करना हो इसको तो कोई निकालने वाला है नहीं इसको, तो कहाँ से ही टेस्ट करूँगा। The person may switch between three forms of enhanced resistance skill to deal substantial basic attack damage. By inflicting and responding to strain interfere, deals more total damage. By utilizing the tool break boost provided by the resident team, Luke also gains substantial. Let me guess, इसका टीम होने वाला है लूक, लिने और अपने शोर कीपर, या मॉर्ने भी यूज कर सकते हो। बट ये टून स्ट्रेन इंटरफेरेट तो ये लेनी ही लगाती है बस, तो लेनी इज इम्पॉर्टेंट आई गेस। अभी तक मैं जितने कैरेक्टर्स है वही लगाती है, लेनी लगाती है सिर्फ टून स्ट्रेन इंटरफेरेट। अमित शायद टून स्ट्रेन इंटरफेरेट लगाती है, बट वो इसके टीम में क्यों ही आएगी, है ना? Leave it in my hands. Oh. Oh. अच्छा देख रहे हो बंदा, देख रहे हो? एक हाथ पीछे कर रखा है बंदे ने। सबके हाथ इधर हैं, इसके भी है, बट इसके भी है। अच्छा वो एनिमेशन था। बंदा भी लाइक मुझे दो हाथ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं एक हाथ से एनिमी डिफीट कर सकता हूँ तो मैं दो हाथ क्यों यूज करूँ? क्या है ये? Bullseye. Bullseye. Oh.
Imbalance ends here. Game over. Huh. Gotcha. अच्छे Time to incise. Blink, and agony ends. Ash takes form. Huh. Gotcha. Right on schedule. Time to incise. Entombed in daybreak. I deliver merciful death. Rise anew. A bearable price. Rot resected. Return to silence. हाँ ऐसे खेलते हैं इसको पहले इसका फोर्टे फिल करो एंड देन इसके इनहेंस्ड स्किल से इसका फोर्टे यूज करो ओके 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 इसके अच्छा तो इसके लिबरेशन के ऊपर 3 स्टार भी हैं यानी कि 3 बार इसका इनहेंस स्किल यूज़ करने के बाद आई थिंक इसका अल्टीमेट और अच्छा हो जाता है ऐसा कुछ है क्या लेट मी सी Leave it in my hands. तो नॉर्मल सा सिंबल है अभी I bestow eternal peace. म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा भाई हाँ म्यूजिक नहीं है यहाँ पे Game over. Imbalance ends here. Time to incise. Entombed in daybreak. You are still not dead. Right on schedule. Rise anew. Gotcha. My scalpel etches your epitaph. 72,000 का डैमेज दिया इसने 3 या 4 बार Blink, and agony ends. ओ भाई भाई यार फीमेल कैरेक्टर के ऊपर साइज क्यों नहीं है फीमेल कैरेक्टर के ऊपर साइज देखना है यार हट हेलो नासिक भाई क्या हाल है कुरो का सब प्लान यो स्काई पता चल गया क्या चीज़ ज़्यादा नहीं खेल पाया था कल वो कुछ मेन हॉल का सीन क्लियर किया था आज खेलूंगा बाकी का वो वेब इवेंट है उससे 15 ईच लेवल में मिलते हैं आज 2 मिले बेसिकली पाइप ज्वाइन करना पड़ता है यही बस अच्छा मतलब एक लेवल कितने लेवल है टोटल थैंक बट उससे तो इजी हो जाएगा फ़न कहाँ है फिर ऑलरेडी मैंने जो वाला डाउनलोड किया है उसमें बहस की है मोड है अनलिमिटेड एमो ओ अगर हेल्प चाहिए तो बोलना सब लॉकर्स का कोड मेरे पे है तुम्हारे टाइम बच जाएगा फिर फ़ायदा क्या गेम खेलने का भाई इससे अच्छा तो वीडियो देख लो गेम इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग जो हो रहा है उसके अंदर कोड ढूंढना सिस्टम मैनेज करना एमोज मैनेज करना स्टोरेज मैनेज करना एनिमीज के अटैक डॉज करना जब सब कुछ दे ही दोगे तो फिर इससे अच्छा तो वीडियो देख लो
अगर तुम लोग पुल करोगे तो तुम्हें अमियत का फ्यूजन बस सब डीपीएस लेना पड़ेगा ही, बिकॉज अमियत की रप्चर टीम पूरा लुक के लिए है, उसको सपोर्ट नहीं आएगा। वाह कैसा, रुको मैं कीबोर्ड करके आता। क्या? फिर गेम हार्डकोर मोड में खेलो वरना फ़ायदा ही क्या, इतने पुल्स नहीं है। बाय द वे लुक एफ टू फ्रेंडली है सानुआ और वरीना के साथ क्लियर कर रहा मिडल फ्लोर। यो ये प्लान होता है, वो तुमको लगता है नेक्स्ट पैच में नो इन हो इन्फ्लेशन हो तब लेने मोड़ने लगेगा। अब वो अभी क्लियर कर रहा है ना भाई, इसके लिए बफ है, इसीलिए जैसे ही बफ हटेगा इसकी टाई टाई फिस हो जाएगी। अगर लाइक किसी ने क्लियर किया निकाला है तो भाई अकाउंट दे सकते हो तो दे दो, जरा टेस्टिंग वेस्टिंग कर ले हम भी, लाइक कैसा है बंदा, यू नो लाइक निकालने वाला को निकालने वाला तो कोई प्लान नहीं है मेरा, बट क्या Leave it in my hands. Floating war with time. Stay behind me. Shackles be gone. Extinguish. A change of Struggling only pains मैं me ऊपर more. कहाँ घुस गया तू? Gotcha. Ash takes form. Veins exposed. Time to incise. Entombed in daybreak. यार इनको अच्छे अच्छे एनिमीज देने चाहिए यार, यहाँ पे क्या टेस्टिंग है ये 2 सेकंड में खत्म हो जाता है एनीवे। Imbalance ends here. Game over. Gotcha. Time to incise. I am the vessel. I deliver merciful death. ठीक है भाई, बंदा इतना भी बेकार नहीं है। क्या उसका क्या कह रहे हो, टावर में कोई बफ नहीं है? वेट अ मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक टावर में जो बफ दे रखा है वो प्रॉपर दे रखा है। अभी देखो लूक का बफ आया नहीं है, जब रीसेट होगा टावर तब इसके लिए बफ आएगा, ठीक है। बट अभी लेट मी सी कि लाइक इसका जो बफ है वो कितना बफ है फिर भी। हाँ तो यहाँ पे रिकमेंडेड है स्पेक्ट्रो डैमेज कैरेक्टर। When resonator cast into a skill, their attack increases by 5% per second, second to 4 times at max again. They gain 40% fusion damage. What the fuck? अच्छा ये अमियत के लिए है ना, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 60 सेकेंड आफ्टर बैटल स्टार्ट रेजोनेटर टोटल डैमेज इंक्रीज बाय 5%, ये तो लोग यूज कर सकता है। ऑल एनिमी एट्रीब्यूट रेसिस इंक्रीज बाय 15% व्हेन द एनिमी टेक्स ट्यून रप्चर डैमेज or a fusion a buster damage. This effect is removed. Okay. Luke क्या डील करता है? Luke ऐसे इंटरफेयर करता है, क्या करता है? Total damage is increased by 10% and enemy takes 100% more fusion burst or tune rupture damage when a resistor casts tune break. Their total damage dealt is increased by 10%. Okay. Okay. Now wait a minute. Wait a minute. plan with convention, then conquer by ingenuity. Tune rupture है ना ये वाला एरो वाला, tune rupture और ये tune strained. Fine. Fine.
इसके में टून इंटरफेयर था ना. Leave it in my hands. इसके में कुछ नहीं है. The incision has to be clean. Don't want to mess for suturing. 306. Okay. 10 for 5, 4, 9 into 5. Luuk also attacks with side. Okay. He also inflicts toon strain shifting on the target hit for 25 seconds and reduce damage taken by 15% for 1 second. As the active resonator while in midair, and this skill cycle will not be reset. While in midair, hold normal attack to plunge attack at the cost of stamina. Oh, okay. Flash forward the target and deal spectro damage. Inflict toon strain shifting on the target hit for 25 seconds. Golden reflex has 2 charge. Aureole of Execution. Casting basic attack stage 4 mid attack replaces a skill. Aureole of Execution, which deals and inflict on the target. Has 3 forms including this. Casting any form grants 1 stack of and switch to the next form in sequence. Switching to another resonator resets the cycle of execution, and as a skill is reset to Golden Reflex. Can be cast mid-air. Deals spectral damage. Okay, the next, okay, basically it is no longer available if dodge counter is cast mid-air or a location is switched out. Spin and dash, dealing spectral damage. And okay. तो ये टून स्ट्रेन अप्लाई करता है ना, ये एनिमीज के ऊपर टून स्ट्रेन अप्लाई करता है. हाँ, डैमेज. ओके, विद फुल एक और फ्लो. व्हाट इज दिस? ये वाटर की बात कर रहे हैं. Enter the original state. In this location gains the following effect. Take all flow does not restore. The damage multiplier of all form of resistance skill increased by 110%. Casting increase the damage multiplier to next by 110%. 100 point is consumed each time that the skill is okay. Ends with equal depletes. Okay. When Luuk is in the team, all other resonator in the team gains Golden Rule. When resonator with the Golden Rule casts outro skill, the incoming resonator is Luuk Hudson. Remove all Golden Rules on resonator in the team and grants of figure flow and 12 points of concerto energy. The resonator in the team gain Golden Rule again after 24 seconds. This effect does not apply in co-op mode. When he stays out of the combat for 4 seconds or casts intro skill, only keep this guy at 1 stack. When taking damage from enemies, consume 1 stack of reduce taken by 60% and gain immunity to interruption for 1 second. 1 second. Okay. Deal spectral damage. Consider basic attack damage. ये क्या है? ये अल्टीमेट है इसका. अरे यार ये क्या है ये? When resonator in the team directly damage and defeat targets, if the targets are affected by toon strain interfered. हाँ तो पर तो भाई जो थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर है वो तो ल्यूक के लिए बफ भी है ना, बिकॉज लूक भी रिस्पॉन्ड कर सकता है टून स्ट्रेन इंटरफेरेट को.
72 208. Let me check. Game over. Rise anew. Right on schedule. भाई ये तो यूं ही मर जा रहे हैं भाई, मैं इनको मारूंगा कैसे? Return to silence. Imbalance ends here. Gotcha. Entombed in daybreak. I deliver merciful death. Yeah. Yes. 1,15,000 मारा इसने confirm. Without buff or anything. I think अमित ने 1.5 लाख मारा था 1,64,000 के आसपास ट्रायल के अंदर. I think इसके लिए भी बफ तो है बिकॉज ये भी रिस्पॉन्ड कर ये वो गर्दन में बिकॉज लिनी लेके जाओगे तो आई थिंक इसका डैमेज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ टून स्ट्रेन इंटरफेयर बिकॉज वो अप्लाई कर सकती है एंड ये इस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है ना. बट अगर सानुआ लेके जाओगे तो फिर आई गेस ऐसा कोई सीन ही नहीं है बिकॉज कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता उस टीम के अंदर बिकॉज सानुआ शोरकीपर लेके जाओ तो. लेटर फीबी के बिना तो जानी चलती भी नहीं. आइए के साइड का हेलो मिके भाई क्या हाल है? 3rd फ्लोर 4 में अमियत का बफ है. शिल लुक का फुल पोटेंशियल सिर्फ फर्स्ट एंड सुपर फ्लोर में समझ नहीं आता. दिखाओ लुक. आई मीन 3.x का सेकंड बेस्ट डीपीएस है सो ऑब्वियसली डैमेज तो होगा ही भाई. मैं तो बोल रहा हूँ उसका प्रीमियम टीम नहीं है. लाइक अगर प्रीमियम चाहिए तो मिलेनी बस मोड ने. ल्यूक स्ट्रेन डैमेज देता है. स्ट्रेन डैमेज देता है बट वो स्ट्रेन डैमेज नहीं. अगर लाइक एनिमीज के ऊपर अगर लिनियर लगाया है वो स्ट्रेन डिबफ एंड उसके ऊपर ट्यून ब्रेक स्किल करते हैं तो आई थिंक ये वो करेगा क्या बोलते हैं एनिमी चले जाएंगे इंटरफेयर स्टेट में फिर इसका डैमेज इंक्रीज हो जाता है उस लाइक नो उसका अगर हम उसके बाद कोई और अटैक करते हैं आई थिंक उसके बाद. लूक का नेक्स्ट ईयर रीसेट में होगा भाई. हाँ वो तो हो गई. अभी भी इसका बफ है इतना कम नहीं है. अब वो तो लाइक प्रॉपर चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना भाई कितना बफ है कितना बफ नहीं है. फिर अमियत के लिए और एक पुल करना पड़ेगा ही 3.3 फिर क्या शायद से कौन सा इन सीजन करेगा किसका आईडी है. हाँ अगर लुक निकाल रहे अमियत का फीचर सपोर्ट चाहिए ही. अब मैं निकालूं या नहीं निकालूं गारंटेड है. अगर नहीं निकाला थोड़ा स्ट्रगल होगा 3.3 तक बट इसके बाद ख़त्म. स्टोरी करो ये सब छोड़ो. बट एक चीज़ बहुत बेकार है लुक को बहुत CR और CR चाहिए वरना क्रिट मिस बहुत करता है और अल्ट लेट से आता है. रीज़न ये है ना कि इसके जितने भी अटैक्स है वो सारे डैमेज डील करते हैं. अगर सारे अटैक डैमेज डील करेंगे तो CR चाहिए इसको. एंड एनर्जी का इशू क्यों है 125 चाहिए इसको. एनर्जी कॉस्ट है इसके अल्टीमेट का तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. 130 120 बहुत है. 120 दे दो आई थिंक स्मूथ हो जाएगा फिर काम. आगे CR तो इसको देना पड़ेगा बिकॉज जितने भी अटैक्स है इसके वो डैमेज डील करते हैं तो देना पड़ेगा. जानी की तरह होता है कि सिर्फ अल्ट में डैमेज आएगा तो फिर इसको 50% CR दे दो उससे काम चल जाता. बट आई गेस CR फोकस्ड कैरेक्टर है ये. लाइक 270 क्रिट डैमेज एंड 70 क्रिट रेट काम चल जाना चाहिए इसका. और ये मत बोलो वाई इज लूसी स्पेक्ट्रो एज वेल इसको पावर किप करने के लिए. सारुआ शोर कीपर और लिने मोन ने 2650 और 2800. वहाँ तो शिल बफ भी है. नारवाई का पुल करो तारा इको जैसा अटैक पैटर्न. नारवाई का पुल करो. नारवाई का आई डोंट नो. नारवाई बोलेंगे तभी तो पुल करूँगा ऐसे थोड़ा ना पुल कर दूंगा. हैं आए
डेलीज करते हैं हम भाई, उसके बाद फिर चलते बनते हैं स्टोरी के लिए। और किया बॉस चैलेंज, सिमुलेशन चैलेंज, वीकली चैलेंज और जल्दी चैलेंज। वैसे वो क्या ऐसे फार्म कर लेता हूँ और क्या करूँ, है ना। ऐसे फार्म कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, टैसेट फार्म करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सिमुलेशन चैलेंज, बॉस चैलेंज। आई गेस मटेरियल्स ही फार्म कर लेता हूँ। आओ मटेरियल्स कर लिया जाए। Wait! Listen! हेलो चैट वर्सल भाई, वेलकम स्ट्रीम। क्या हाल है? लूक S6 डन। व्हाट डैम लूक S6 R5 वेपन के साथ फिर तो ट्राई करना तो बनता है भाई। S6 बाप रे। अरे शिल्प बस वीवा में है, वहाँ टेस्टिंग की FTV और प्रीमियम टीम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया भाई। स्पेक्ट्रो कैरेक्टर स्किप करने का मन ना है, बट अगर स्किप ना किया तो कोलैबोरेशन में कैरेक्टर स्किप करना पड़ेगा। मेरे अकाउंट में एक भी स्पेक्ट्रो DPS नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा फ्यूज़न के हैं, लाइक फ्यूज़न का मेरे पास गलबिना नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे पास फ्यूज़न के लिमिटेड वाले। उसके बाद इलेक्ट्रो में मेरे पास अगस्ता नहीं है, है ना। ग्लेशियो में मेरे पास DPS है, कार्लोटा हमारे पास है, ठीक है। और स्पेक्ट्रो में हीलर है मेरे पास, ये शोर कीपर। DPS एक भी नहीं है मेरे पास स्पेक्ट्रो का। बट जल्द ही लूसी होगी मेरे पास। Okay, loading. Hand over the Sever. Take form. Whirling up. Starfall! Micropod! Light show of the finale. Fire! Order confirmed. हेलो डांटे भाई, कैसे हो? वेलकम स्ट्रीम। ना R5 नहीं R1। कितना डैमेज कर रहा है वैसे? मेरा हैवॉक का DPS नहीं है, एक भी हैवॉक है नेम पे चीसा। वैसे भाई आप तो GC भाई के स्ट्रीम में आते हो, मैं वहाँ से ही हूँ, इसीलिए। लूक का बैनर आ गया? हाँ आ गया। अच्छा GC भाई लेवल 1 है। S6 कैरेक्टर कर लिया और लेवल 1 है। वाह। Loading. Hand over the good. Mind's eye. Sever. Take form. Be reduced Wow. to cinders. बढ़िया बिल्ड करो। वैसे फार्म तो कर रखा होगा ना पहले से ही, या फार्म नहीं कर रखा है? फार्म नहीं कर रखा है तो फिर आई गेस टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इकोज में। अगर इकोज पहले से फार्म कर रखे हैं फिर तो आई गेस बहुत ईजी हो जाएगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यार यार
इमेजिन इस वाले इको में डबल CR आ जाए, आई मीन डबल क्रिट आ जाए, डबल क्रिट, ये एक तो आ गया। ये वही है CR और बेसिक अटैक डैमेज जो लूक को चाहिए वही। इमेजिन इसके बाद CD आ जाए। अगर इस पे CD आ गया तो मतलब लूक चाहता है कि मेरे अकाउंट में वो आए। अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, नहीं आया बहुत बढ़िया बात। ऑलराइट, अपना ये हो गया, अभी 2 और बाकी है। कंप्लीट कुकिंग वंस, ऑब्टेन 1 इको, डिफीट 1 क्लास एनिमी, कंप्लीट 1 डेली क्वेस्ट। यही कर लेता हूँ यार। और कौन से कैरेक्टर रीजन आए हैं लुक के साथ? गलब्रीना दोगलापन देख रही है। और डिफेंस आया तो कुछ नहीं। Loading. Together we vanish. My blade yearns. Mind's eye. Cross cut. Sever. We are done with the dailies. We are done. बजार्टर यार, वेट नहीं हो रहा मुझसे वो उस ग्लेशियो वाले कैरेक्टर के लिए, ग्लेशियो कटाना वाले के लिए। कब आएगी वो भाई? ये क्यों बोल रहा है? मुझे निकालना है उसको, ग्लेशियो कटाना। जल्दी आए। आई थिंक वो कब आएगी? अप्रैल में आएगी ना वो ग्लेशियो कटाना वाली, या अप्रैल में ही आएगी यार, अप्रैल में ही आएगी। फरवरी में आई थिंक 26 को आया है ना, तो 26, 27, 28 3 दिन ये हो गए, 3 दिन। और 21 दिन का बैनर रहता है, तो यानी कि 18, 19, 20, 21 18 दिन और, तो 18 दिन और 20 तारीख को अपडेट आएगा 3.2 का, 20 तारीख को। तो 40 दिन, कितना 44 डेज रहता है, 44 डेज है, 42, 43 डेज का आता है। कितने दिन का होता है पैच? 42 का होता है आई थिंक, शायद से। तो 20 तारीख, एक सेकेंड, मार्च, अप्रैल, मई। अगर लाइक 20 तारीख को 3.2 आएगा तो पूरा अप्रैल The moment at hand. तो This 3.2 में चला जाएगा। very moment नहीं, is the best of लाइक our 20 तारीख को lives. स्टार्ट होगा और 10 दिन वहाँ पे, अप्रैल का पूरा महीना 30 दिन, तो पूरा तो उसमें चला गया। फिर 3.3 आएगा मान लो 1 से लेके 5 मई के बीच में, तो पूरा मई का महीना तो उसी में चला जाएगा। एनिवर्सरी तो 3.3 में निकल जाएगी। तो मतलब 3.3 इज द एनिवर्सरी पैच आई गेस, अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं उसको 20 दिन का। Guess to be loading. इस हिसाब से तो 3.3 एनिवर्सरी पैच है ग्लेशियर DPS वाले, Diminish in war एंड with time. 3.4 में बैनर आएगा, Together we vanish. अनलेस 3.3 एनिवर्सरी वो बन जाता है साइबरपंक। Mind's eye. My blade. Take form. भगवान इधर। Who's the caged bird now? Early up! At your command. Souls sing in harmony to the Savior's victory!
Light wings activated. Stars shine tonight. System recall. Heroes on. Lights up. Leave it to me. Checked. State loading. Astral modulation. Together we vanish. Sever. Take form. Be reduced to cinders. Whirling up. Starlight over the seas. Scorch through the void. Like a light show of the finale. Fire! Order and cluster cannon ready. The savior rises. स्काई रुक मैं लुक ट्राई कर रहा पुल करने का, अगर मिल गया मेरे अकाउंट में टेस्टिंग कर लेना। ओके ओके ओके, करो करो। डिफेंस आया तो अकाउंट इसका बाकी देखते हैं। वेपन नहीं निकल रहा। हाँ 3.3 इज स्टैग्ड एंड साला यंग भी तो स्किप ना कर सकता। कीप इन माइंड 3.2 विल बी शॉर्टर पैच। स्ट्रीम लैब तेरे पास का ऑब्वियसली 3.2 शॉर्टर पैच 35 डेज ओनली होगा। स्टिल अगर 35 डेज का मान के चलते 3.2 है तो 20 तारीख को स्टार्ट होगा, ठीक है। अप्रैल का महीना कितना होता है, मार्च का महीना कितना लंबा होता है? 31 दिन का Give it होता a try? है ना? Like this. लेट मी चेक कितने दिन का होता है मार्च का महीना। Here. एक सेकेंड, आई थिंक 31 दिन का होता है मार्च का महीना, है ना? 11 दिन वो हो गया होगा, 35 दिन का होगा। Wow. 3.2 It flew so far. फिर तो Impressive. अगर हाँ 3.3 एनिवर्सरी पैच होगा फिर तो आई गेस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 3.2 अगर पूरा पैच भी है फुल पैच तब भी 3.3 में एनिवर्सरी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बट अगर 3.4 में एनिवर्सरी पैच है तो आई गेस दिक्कत हो जाएगी। आई मीन हमें नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो मिलना है जो मिलना है। आई गेस फिर 3.3 इज एनिवर्सरी पैच। लेट्स सी, अब देखते हैं साइपंक किसमें आएगा, 3.3 में या 3.4 में। उसका टीजर दे दे भाई, वो 3.2 में टीजर दे दे उसका। इस बार जब आएगा लाइव स्ट्रीम दिखा दे भाई क्या 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 होने वाला है इसमें। मज़ा आ जाएगा। इनको करना भी चाहिए भाई, एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए, हाइप बिल्ड करने के लिए। नो इट विल बी बेटर, और लोग आ जाएंगे इसी बहाने गेम ट्राई करने। Whirling up. System protection. तेरी भैंस का कौन है बे? The world is mine to guard. Objective. Blade cleaves the night. Peril. Burst in light. अबे Light arc. Light show of the finale. Fire! Order confirmed. Cluster cannon ready. The savior rises. Like a pot. Heroes on. Lights up. Leave it to me. Loading. The feeling of pain. Astral modulation. Together we vanish. Mind's eye. My blade gifted. Take form. Who's the caged bird now? Whirling up. Starlight over the seas. Scorch through the void. Solar flare. Eclipse. Light show of the finale. Fire! Order confirmed. Light wings activated. Stars shine tonight.
हो गया भाई हमारा, फिर से ये भर गया। अरे हैं इसकी धत। आगे स्टोरी करते हैं हम, अपना काम हो गया। किधर जाना है हमको? गो गो गो, इधर इधर जाने का, इधर जाने का, स्टोरी करने का टाइम है। चलो स्टोरी करते हैं। यार भाई आप भी गाली दो स्ट्रीम लैब्स को, गाली दो पे, ऐसे सब गाली दो। इस बार की एनिवर्सरी में कुछ भी रीजन आया मैं ना कर रहा फुल। ऑब्वियसली बात है, कैसे करोगे फुल? अगले पैच में लूसी आएगी, उसे स्किप करोगे? वैसे आई थिंक जो साइपन का कोलैब का बैनर होगा वो ज़्यादा पैच रहेगा, एटलीस्ट एक पैच से ज़्यादा रहेगा। एक पैच तो पूरा पैच रहेगा ही रहेगा वो, आई थिंक। मतलब जैसे नॉर्मल बैनर्स होते हैं ना 21 दिन के, वो आई थिंक हो सकता है कि पूरा पैच रहे। यू नो ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा कोलैब करेंगे वो भी 21 दिन के लिए, बहुत कम हो जाएगा भाई। तो एक पैच तो आई थिंक उसका बैनर रहेगा पूरा, हो सकता है अगले पैच भी रहे आधा। तो या Galbrina. Oh hell no. क्या यार ये 8 का DLC नहीं खेला तूने? शैडो ऑफ रोज बस 2 आवर्स का खाली। अरे मेरे पास कहाँ है भाई DLC, वो गेम था, फ्री मिला मुझे गेम Xbox के गेम पास से। उस पर DLC होता तो मैं DLC भी खेलता, बट DLC था ही नहीं तो मैं कैसे खेलता? DLC होना भी तो चाहिए था उस पर। 1500 कॉल्स है ना, बोल दो, है ना बोल दो। अरे नहीं है भाई मेरे पास कॉल्स। यही होगा 3.3 एनिवर्सरी एंड दे विल टीज 3.4 कोलैब कैरेक्टर्स इन 3.3 लाइव स्ट्रीम। वो तो हो गई, बट आई वुड से कि लाइक टीजर देना चाहिए कि कोलैब में क्या होने वाला है 3.2 में, बिकॉज 3.4 में तो फिर मैंने वो लेके आना ही है कोलैब। तो लाइक 3.2 में टीजर, 3.3 में प्रॉपर ट्रेलर, बिकॉज अगला पैच उसी का ही है, एंड 3.4 तो आ ही जाएगा फिर। ऐसे इनको करना चाहिए, यू नो। लेट्स सी भाई, लेट्स सी क्या होता है। जब अभी जो लाइव स्ट्रीम हो उसमें टीजर दे दें ये लोग कि क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत 30 सेकंड का काम बन जाएगा हमारा। उसका जब 3.3 की लाइव स्ट्रीम होगी, यानी 3.3 पैच आ चुका होगा, आई मीन नहीं, हाँ 3.3 की लाइव स्ट्रीम होगी 3.2 में, उसमें वो एक और टीजर दे दे। ठीक है, जब आना होगा आ जाएगा भाई, अपन स्टोरी करते हैं। कहाँ पे जाना है? इधर है। हाँ Look over here. What? How do मैं नीचे कैसे जाऊँ? Roving among the stars. Wait, मैं नीचे कैसे जाऊँ भाई? I'm a transform. Ascending. Descending. What? Lasers charged. बता रहा पूरा लाहौर ही तोड़ दूंगा। Mech mode off. Propulsion mode. Warning.
Insufficient power supply. Mech mode off. Mivora. She's been staying here to recover. इसका नाम निवोरा है, निवोरा। HSR में 3 पैच था, इसमें भी चाहिए। हाँ वही ना, वो ऑब्वियसली बात है, पूरा निचोड़ेंगे भाई लोग पैसे को। इतना बड़ा कोलैब करेंगे जस्ट फॉर 21 डेज, फायदा नहीं होगा भाई उनको। क्या तुम कैरेक्टर पुल करो ब्रा, इकोस इतना वेस्ट। तुम कैरेक्टर्स पुल करो ब्रा, इकोस इतना वेस्ट। क्या मतलब, समझा नहीं। Look over here. स्टोरी करने के बाद DLC अनलॉक हो जाता है, तो वो क्यों अलग से देते DLC फ्री होता है ब्रा? क्या भाई? नहीं, उसमें कोई DLC खेलने का कोई ऑप्शन नहीं था। फ्री DLC है या पेड है DLC, पहले ये बताओ। अगर पेड है DLC तो अनलॉक नहीं होता भाई, परचेज करना पड़ता है। अगर फ्री DLC मिला है सबको, जिनके पास भी बेस गेम है, तो फिर मुझे मिला होगा, मैं खेल लूँगा, कोई देखने वाली बात नहीं है ऐसी। बट अगर पेड है वो, तो फिर आई गेस उसमें नहीं था। पेड है DLC। फ्री हो गया? अरे क्या है भाई, पहले चेक करके बताओ गूगल से कि RE8 का जो DLC है वो फ्री है या पेड है। तब बात करेंगे। कैसे भी मैंने फ्री में खेला है, क्या बोल रहे। Look चलो over भाई, स्पॉइलर here. नहीं चाहिए मुझे। जीजी का कुछ करना है उसके पहले। ये बताइएगा फर्स्ट वीक होगा इनके भाई। एक्स्ट्रा कंटेंट या डाउनलोड कंटेंट बोल सकते हैं DLC का मतलब ही नहीं पता। स्टोरी करने के बाद DLC अलग हो जाता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट एक्स्ट्रा कंटेंट। एंटी खेलोगे या वुवा का 3.3? मुझे कोई न्यू गेम छोड़ना होगा एंटी के लिए, आई गेस वेव एंड स्मिथ। मुझे यूज करना होगा। हाँ 29 अप्रैल को एंटी आने वाला है ना, ये सस नहीं वो रहा। पेड फ्री इसलिए बोला कि कैरेक्टर पुल करो। अच्छा मतलब बैग में इकोस फुल रहता है तो कैरेक्टर पुल करूँ मैं? वाह। Look over here. भाई एक बार को मैं इकोस हटा सकता हूँ, डिस्कार्ड कर सकता हूँ, कैरेक्टर नहीं कर सकता। वन है का यैपिंग, फिर मुझे पता नहीं। तुम चेक करना, क्या चेक करो। मैं पहला गेम खेलूंगा उसके बाद चेक करूंगा। How are you recovering from your injuries, Nora? ऑटो करो भाई। Oh, it's you, Rover. Yes, I'm feeling much better. Dr. Herzen took very good care of me. I just did what he said and rested for a few days here, and I barely feel any pain now. Are you here to visit him? Yes, we have something to discuss. Bro is speaking Is he here? actually मैं भाई ये बोलता भी है स्टोरी He's के in the अंदर, मतलब counseling बोल room next door. My friend बंदा Sigrid बोल is in कैसे there. रहा है? मेरे शायद 5 It सेकंड के might लिए, take a अब चुप हो while. जाएगा थोड़ी देर में। Thanks. Take care of yourself. या ये लास्ट लाइन है इसके, अब नहीं बोलेगा ये बंदा इस स्टोरी के अंदर। बस स्टोरी स्टार्ट करने के लिए बोला है ये बस। How to put this? I think you can have more faith in yourself, Sigrika. Faith in myself.
मैंने ऑटोमेटिक पे सेट कर रखा है तो ये चल क्यों नहीं रहा है? What the hell? ऑटोमेटिक डायलॉग होना चाहिए ना, मुझे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं रोवर हूँ यहाँ पे, मैं दूर से देख रहा हूँ। अरे ये क्या है? ऑटोमेटिक चल रहा है वैसे। People can be more perceptive than you might realize, including those you care about. So try not to take everything to heart. Go a little easier on yourself. स्काई चेक करो, कार्ड डालूंगा, चेक करो कौन कौन लुक निकाल रहा है वैसे। स्काई आई विल ट्राई। क्या स्काई Good or बताओ bad, क्या हुआ? true or स्काई सर false, नहीं कर रहा स्काई। these things have a way of coming to light. स्काई लुक And पुल as your करो। friend Denny has said, ब्लिप, ब्लिप। sometimes a little distraction is good for you. अपना अकाउंट दो, पुल करता हूँ, लाओ। Yeah. I'll give it a try. Thank you, Dr. Harrison. You're welcome. Again, don't push yourself too hard. I take it you're the type who'd suddenly bolt up in bed at night, wide awake, worrying about an exam? And that'd probably go on for a whole week. Huh? Is it really that obvious? Only my conjecture. Would you like some candy? Sweets help keep a smile. Sure. And is it okay for me to come back some other time, Dr. Harrison? Why, of course. Feel free to visit my office anytime, Sigrika. So, about that Exostrider plan you mentioned. Let's get into it. All in good time. Let's start with something lighter first. Something lighter? Any topic at all. But let's slow the tempo a little. You're too eager. Your emotions are clouding your judgment. You must feel it too. Here, a piece of candy. It'll help take the edge off and lighten the mood. No. Thanks. I understand your anxiety over Imeth's situation. You've always held her dear, but it's taken more out of you than you realize. Things are best taken one step at a time. The Exostrider hasn't awakened yet. The key is to pace ourselves. Slow and steady, right? Okay. You're right. Let's table the Exostrider for now. Let's talk about you, Luuk. I trust Imeth. What we experienced together proved she was telling me the truth. And there's a connection there I can't ignore. But you and me, we might be strangers in passing who became confidants, as you put it. But it feels like every conversation we've had just skims the surface. I prefer to know who I'm working with before jumping into something as big as opening the Strider Gate. It'll affect the entire Lahai-Roi region. Point taken. It seems a proper introduction is long overdue. Please, ask me anything. I'll answer as candidly as I can. Are you a consultant from the Black Shores? That I am not. Work that leaves documented trails doesn't suit my style. But I am acquainted with quite a few bloom bearers.
Imith said she didn't know you well, but that I could trust you. You also know about the bond between me and her. How? Imith is a sharp girl. Even though you never introduced me to her, she could read between the lines of your actions. She's a lot like you. Smart, driven, good at bearing burdens. Though she's proven to be even more stubborn than you are. After you left Lahairoi, she came to see me a few times in the name of counseling. To learn about you. You didn't tell her anything. I didn't. You had other tasks for me here in Lahairoi. You didn't let us properly get to know each other because you wanted to shield her from my line of work. She later stopped these visits after realizing that. Still, I really hoped she would have opened up to me more. You both tend to keep things to yourselves, and that's never good for anyone. One last question. What did you mean? I had other tasks for you. That is a key topic, but not suitable for discussion here. The Space Trek Collective is backed by a number of different nations and powers. Their internal politics are of no concern to us. There are many watching eyes among the support staff. The infirmary is, after all, a public space. Why don't we take this somewhere more private? To where? I have a place in mind. Just come with me, golden boy. More personal business to attend to again, Dr. Herson? Shh. Just a quick break, Nana. Mind holding down the fort? The next shift will be here soon. Take care, Doctor. Do try to return in one piece. Don't worry. I have him with me today. कैसे कर रहा है भाई? शिश ये कौन था भाई? What the hell? Sundermere. Yes. I keep a small workspace of my own here. ये न्यू एरिया है या फिर लाइक पहले से था?
Leave them to me. Let's not waste any more time. Right on schedule. Time to incise. Ash takes form. Gotcha. Game over. Blink, and agony ends. The Exostrider's sword emits a unique frequency. It shields my workspace from most long-range detection methods. You picked a good spot. Oh. A small workshop. तो ये like kind of छोटा सा एरिया खुला है. Quite a stash. This is what a secret room is about. Now, where were we? Let's start with the conclusion before we get into all the details. You asked me to come to Lahai Roy to watch for any Fraxidus activity. Warren was the first Fraxidus mole you uncovered, and you certainly won't be the last. Think of the Space Trek Collective as a web of competing powers. It's as much a haven for independence as a playground for agendas. An isolated polar region, rich with exoswarm and the potential for technological breakthrough. Lahai Roy is a gold mine, even for the Fraxidus. You're saying the fall of Helios wasn't the real goal? It was one of several. After your journey in Huanglong and Rinasida, I'm sure you've come to realize their true aim. The Thenodian. Aleph 1. Correct. Given the Thenodian's unique nature, it's sure to catch their attention. Moreover, Aleph 1 is closely linked to the Strider Gate, which may be our ticket to outer space. Spying on the Fraxidus is risky. Why would I have chosen you for this task? Well, that is a bit of a long story. You've always preferred to see things for yourself. Please, follow me to that table. स्टोरी करने का मन ना कर रहा The golden serum, developed by the Naviale group. तो यहाँ पे देख I लो. prefer its other name, Ichor. My father started it as a medication for rare diseases. But as research progressed, it came to represent something far more ambitious. The drug of evolution. Evolution. Sounds like something the Fraxidus would like. Well, on paper it worked. I became its resonator, so it would be unfair to say it was entirely useless. But I was a rare case who survived. All it cost me was excruciating pain and my color vision. Most test subjects like me didn't make it. It wasn't until I met you that I realized there was more to the story. The rest is in my study, shall we?
भाई रूम तो बड़ा सही बना रखा है बंदे ने। देख रहे हो भाई, यहाँ पे एक्वेरियम, इतना बड़ा एक्वेरियम, यहाँ पे फायर है, ये फायर है, डिस्प्ले बस टीवी है। एंड नाइस भाई, बहुत सही रूम है भाई। समथिंग seems, अगर छोड़ो, My brother Ryan drew this picture. Not related by blood. Father PH took का us चार्ज both in खत्म हो after जा his रहा own है, children चार passed बैग away from a rare फोन illness का, long या तो ago. जली कैंते का रूम है। I ये never could क्रिस्टोफर handle ही है। pain. लग रहा है was मुझे easy to क्रिस्टोफर cheer up. जैसा वो Whenever the राइट साइड grown-ups would वाला, give me candy, बट I'd save it all for him. मुझे लगा भाई पहला देख के कहीं क्रिस्टोफर तो नहीं है वैसे। That's why he always has candy with him. बट कोई और For भी a हो सकता है while, भाई। I tried to be the perfect son Father wanted. It never worked. So eventually I stopped trying. वैसे It दोनों only भाई got हो worse सकते हैं from भाई, there. What क्रिस्टोफर Father और tried to ये, do to Ryan was unforgivable. And then came that because accident. दोनों के ब्लॉन्ड हेयर हैं, I thought what दोनों my father did was a rather mundane story. A cliche. Someone trying to atone for past guilt, दोनों only के to रेड cause आई greater हैं। harm. Until your hints made me suspect it was someone's staged finale. So I had my father's grave exhumed. It was empty. The entire Lola logistics carrier was already blown to smithereens by the time I recovered this page. I managed a quick glimpse before the fire consumed most of the page. It is a report from an overseer. A Fraxidus Overseer's report on its way to the new Federation. Yes. Tucked away in a Lola logistics delivery box. The recipient is Eris in the new Federation. Eris. Those 3 items you just showed me. Did the Fraxidus get into Noviali's work after learning about the Icar's potential for evolution? They didn't just get into our work. They went a step further. Replacement. Have you ever met the Fraxidus' Grand Architect? The thousand-faced survivor. We met near the Styx Lake deep within the Dark Tide. Wait. Does this mean your father was... Yes. My father was just another face the Grand Architect borrowed. Though looking back now, I can't recall the moment the real him was taken. I think the Grand Architect sees life and death as a game. I wouldn't be surprised if Father was even smiling in his coffin as we buried him in that downpour. So, that's your answer. Why did you choose me?
Because I have a very personal reason to go after the Fraxidus. Hatred. Hatred. Even now. Now, it has become something of a habit. Continue this train of investigation and you'll see for yourself what they are. But before you do, there's something I should share. My friends in the Black Shores told me you've already had a few run-ins with certain overseers. Is that right? 3. Cristoforo, Frolova, and Scar. Plus the Grand Architect you mentioned. Ah, those names do ring a bell. Frolova is codenamed Hecate. Cristoforo? Arachnos. Intriguing, isn't it? The flair they have for their own branding. But it's a telling detail. The codename can reveal its owner's style, personal tastes, and even ambitions. Think about it. A powerful resonator who causes chaos at random leaves no trail to follow. But give them a preference, pattern. We can start to build a profile from the pieces. I've been compiling reports on the Overseers for years. Allow me to share what I've learned so far. I've reactivated your access. You'll find the door controls right over there. The Fraxidus is loosely organized. Most of its members have only undergone basic, artificially induced body Astro modification. was smart, unlike They're the not Red terribly Rover. difficult to neutralize. But if you encounter artificers with more creative modifications, you're likely looking at the handiwork of Hydra. Hydra is their leading mind on human evolution and body modifications. Whoever they are, they often work in tandem with Siren. In other words, if you spot one, be on guard in case the other is lurking close by. Zashiki Warashi won't require much of your attention. This overseer primarily operates in Ashinohara, a region that's been largely destroyed by the Lament. Ashinohara. I've heard of it somewhere before. The girl we had in the infirmary for a while. Chisa, I remember. The city that trapped her, Honami, is part of Ashinohara. Now, on to 2 key pieces of the puzzle. I did say the Fraxidus was a loose organization, but even the most scattered cells still need funding to function. Remember that report from earlier? It's only a matter of time before you go to the new Federation. And based on the intel I've gathered, that's their most critical base of operations. And where you'll find Eris. How critical? Do they operate in the open? Not exactly. But in a place where money talks, they must have members in the highest echelons of government and business. Key members. Their foothold in the new Federation has given them immense leverage. With that endless stream of wealth, the Fraxidus operates with impunity across the planet. Speaking of which, Star Torch Academy is also heavily funded by the new Federation. To be blunt, they're the Space Trek Collective's single largest donor. Eris, huh? Duly noted. I'm assuming the other key piece is the Grand Architect? The Fraxidus Grand Architect. Their true name is unknown. They only appear through borrowed identities. Real people, legendary beings, and even the phantoms of the dead from others' memories. I did brush shoulders with them once. It was a shame. I had no idea at the time, and missed my shot. This pen was the only thing I brought back from that great fire. I have yet to decipher the lettering,
but it shows one thing for sure. The Grand Architect has been around for a very, very long time. It's a pity you called me to the High Roy. Otherwise, I would have continued following that trail. But you always have a good reason, right? You uncovered all this by yourself. More or less. I did have some help along the way. To get your hands on one of the Grand Architect's personal items, you did more than just follow a trail. You infiltrated them. Playing along with them isn't that difficult once you get the hang of it. Like I said, they are a loose organization. Knowing the Fraxidus, वही तो मुझे लगा stealing all that ये intel on the आशिनोहारा overseers is risky. जापानीज नाम लग रहा No है matter भाई how बहुत loose they ज़्यादा Each infiltration will only be more dangerous than the last. Luke, how can a doctor who doesn't value his own life save anyone else's? You know, this is the second time you've said those words to me. They got away again. Oh. If I hadn't been so cautious, I could have taken care of them this time. I should send today's findings to him. It's been 2 years. Suppose I'm due for a report. Good. You got the intel. Would have been a shame if I got myself killed for nothing. You want me to go to the High Roy? Why? There's evidence of their activity in the High Roy. I need you to keep an eye on things. And frankly, you need a break. Now is not the right time. You've already drawn enough attention. Do we really have to wait for you to get killed to decide it's the right time? How can a doctor save anyone else's life if he doesn't value his own? Keep pushing like this, and you'll be no different from them. Not pulling any punches, are you? Trust me, that's only the warm-up. The High Roy is a nice place, Luke. Bright, passionate students. Beautiful snow. Perfect for slowing things down. Listen to me on this. Come. Very well. As you wish. So I've led a leisurely life in the High Roy ever since? No need to worry. I know my limits. Let's set aside the Fraxidus for now. We should discuss the Exostrider plan. But first, tell me what happened to you and Imeth in the Frostlands. I see. Imeth, she... No wonder you're in such a state. I understand her reasons. She was fighting for her dream, for the High Roy, in the only way she knew how. And I respect that. The fate she chose for herself. But I won't accept it. There's more I haven't tried. I'm not done fighting for her. Of course. I wouldn't expect you to give up so easily. Now, about the Exostrider. It started with the Space Trek Collective finding a giant solid-skin root network in Bjarter Woods. They identified it as the lid, sealing the Strider Gate, so to speak. It keeps the Thernodians' fractured forms sealed on both sides of the Strider Gate. Break it, and these forms will reunite. That wouldn't just spell the High Roy's doomsday, but the entire world.
but the collective still yearned to open that gateway, to explore the unknown. So, they created the Synchronists. The idea was to use augmented resonance to amplify the Exostrider's power, hoping that would keep the Threnodians suppressed. But lately, the Threnodians' attacks on the seal have been increasing. I'm afraid the Fraxidus is also getting ready to make a move. With the reactor core returned, all you need now is a little patience. Wait for the Exostrider to awaken. Then we can focus on how to use it to find Imeth. You were a synchronist in the Academy once before. I'll speak with Lucilla about getting you piloting access. Then I'll wait for your news, Luke. Certainly, but our immediate priority should be the Fraxidus. I have a feeling they're planning to sabotage our plans for the Exostrider. Rover said he'd like to check on the Exostrider in the Frostlands before he left. Well, could be a way to take his mind off things. Now then. Dr. Herson, is something the matter? Must you always assume the worst, Lucilla? Can't I just call to chat? I find that highly unlikely, Doctor. Let's skip the preamble. What is it? Rover. Ah, so this is about Imeth. He was so tight-lipped with me about what happened in the Frostlands. Yet he spoke to you. Sitting on our hands won't fix anything, and he was willing to open up. If a friend runs into trouble, I'll naturally step in to listen. Besides, what I have to share today benefits the Academy. It could help us get ahead of a few potential issues. Very well. Let's hear it then. Meet me at the Institute, the usual spot. ओके लेट्स गो। क्या इनको पता है रोवर ने क्यों मेमोरी इरेज किया? नहीं, आई थिंक नो। My head's spinning. Oh, Dr. Herson, it's good to see you. Ethan, you looked fine not long ago. What happened to you? My thesis, my spot at the... Hold on. I recall you coming by the infirmary with good news earlier. Something about an institute professor recruiting you for your top marks? Is this the price you have to pay for that? Careful. You might get talked out of the job over health issues. No, I will get that position at the Institute. I'll crawl there if I have to. I'll come back from the dead if I die first. Now you're just delirious. I know getting this opportunity wasn't easy. You can't exactly just ask for time off. Come by my office later. I'll write you a sick note. You can't run yourself like an exoswarm, thinking you'll recharge the moment the sun comes up. It's not how we humans work. Thank you, Doctor. Good things are bound to come your way. This takes me back. I always got my best sleep passed out in your infirmary. Let's see here. Who's still skipping their physical checkup? What do these people not believe? Ah, young Luke. What brings you to the Institute today? Just here to discuss something with someone. How have your shifts been treating you these past few months? Not bad. You know, these researchers, getting them in for a checkup is like pulling their teeth. I have to hunt them down myself.
What do you say we grab a drink after my shift? The meal plans here are all nutritional efficiency. Taste like chewed up cardboard. Of course. Why don't I show you that scout drone model I just finished while we're at it? You work fast. You really do enjoy that sort of tinkering. मुझे ये बोला शिरा के Taking ठीक things है ना apart फिर and भी putting them इसका back together ribbon again is tight quite क्यों stress है? relieving. वो ऐसे It's a डिजाइन है nice way भाई to unwind after a day's work. डिजाइन है बस So, what do you say we sneak over to Rogan's place when we get a minute and liberate the भाई cannon barrel डेव्स के from that ऊपर है precious वो bod of कुछ भी his? बना सकते हैं उनके ऊपर है We can put it back after he's had a good meltdown. उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कुछ भी बना सकते हैं I'd rather not be an accomplice to that. It's unethical. And I can't believe you're still holding a grudge over that fish he stewed behind your back. extra tight Have a seat, Doctor. Shame. I thought he would come with you. He's been here before, but things are different now. I prefer not to have him tangled in the collective's trivial matters. Fair enough. But I'm not like those stubborn old goats you're used to dealing with. I don't chase after pride or rank. All I care about is Star Torch Academy. Now go on. Give me the highlights, Dr. Herson. The Fraxidus. I understand. I'll keep a closer watch. As for piloting the Exostrider, if he is capable, that's fine by me. The Research Institute will see to the preparations. That said, we can't ignore the risks that come with opening the Strider Gate. I have someone in mind who can help. But first, let me have a quick word with her. The Threnodian concerns every one of us at Lahairoi. I'll handle the board as you've asked. You focus on him and the matters here on campus. Thank you for understanding, Lucila. President. Our conversation went more smoothly than I expected. I thought you might think I had a hidden agenda. As a thank you, care for some candy? I'll pass. I'm well aware of your candy outreach program across campus. I've had my fill of sweets over the years. As for what you said earlier, I've been here long enough to know exactly who you are. Thanks to your efforts in uncovering those moles, the Academy is safer, and we have far fewer headaches to worry about. What truly surprised us was your choice to stay all these years and become one of Lahairoi's steadfast guardians. Oh, I'm just glad the President doesn't see me as some busybody. You're the right kind of busybody. The kind we're happy to have. A friend of mine sold me on this place. Went on and on about the beautiful snow and the bright, passionate students. Convinced me to come. But when I actually got here, nothing like the brochure he described. Turns out, 8 out of 10 staff members were planted here by different factions. Our students dream of reaching the stars, all while living in a gilded cage. Meanwhile, we have Roya dealing in exoswarm parts and colluding with new Federation smugglers.
I know that these students aren't fools. They're the best minds from across the nations. If even I can see what's going on, how could they be blind to it? It's their ideals, their hope for the future that lets them endure the ugly realities of this place without becoming cynical. I only came to Lahai because a friend recommended it. But now... Now you've grown to like it here, right? Yes, same as you, Madam President. An urgent transmission from Nana. If you'll excuse me. Dr. Hurd said there was a break-in at the infirmary. Nivor is being kidnapped by the one we previously detained, Warren. What is your status? Are you severely damaged? No need to worry. Just need time to repair. Understood. Prioritize damage control after this call. Notify the Academy's security department. It'll take time for them to respond. I'll go after Warren. Which direction did he take her? Received message from the Academy. They're heading towards the Sky Arc space station in the Frostlands. It's the Court of Savante space station he and I discovered before. I'm on my way. Warren has escaped. He's taken a student and is heading for one of the debris fields in the Frostlands. What do you plan to do? I'm going after him. I'd like you to set up a perimeter there to cut off his escape and prevent any further risks to the Academy. You want me to secure a perimeter while you go in alone to handle Warren? I have a hypothesis. One I'd like to verify by myself. Very well. Your track record warrants it. Go, Dr. Herson. I'll expect good news. Asset field. Nivora. Why now? I know you've been here before. Take me to the data room. Now! Okay, I'll do anything you say. They're heading deeper into the station. Is there someplace we haven't discovered yet? Right on schedule. Gotcha. Rise anew. Return to silence.
The researchers the Academy stationed here. 2 with gunshot wounds, but still alive. And this one? No vitals. Oh damn. One died. Their bleeding stopped. I should keep going after Warren. Right on schedule. Ash takes form. Game over. Blink, and agony ends. Spatial anomalies. Did someone reactivate the Skyark system? I'll get out of Lahai Roy. Out of this cursed place. पता नहीं क्यों नहीं heal कर सकता. It appears Warren's taken Navora to the data room we visited earlier. The path is blocked. It's those error modules again. I should use the adapter. A nice change of view. It's cleared. Gotta keep moving. Refreshing. Almost there. Now, moment of truth. I brought the student, just like you asked. So, you... Where are you? Lahai Roy was just a minor setback. I'm still useful. I still have work in the new Federation. I still... Stop hiding! Say something! You! That doctor who's always watching. You've reached a dead end, Warren. Don't you see that? It's your dead end! Skyark's data room. There must be a reason. Is that just impulse? Perhaps. Right on schedule. Return to silence! Accurate prediction. Ash takes form. Time to incise. I am the best. Veins exposed. Dr. Herson! Warren, is he? He's only unconscious. Everything's okay, Navora. How are you feeling?
वाह क्या गिरा है I'm fine. It was just that he struck me in the back of the neck. It really hurts. I'm really scared. It's okay. Don't force yourself to hold it in. After a shock like that, it's much better if you let it out. Keeping it bottled up is stressful in itself. Take your time. Tell me what happened when you're ready. Okay. I'll try. I just need a moment. Then rest here for now. I'll go check on Warren. I fell asleep on the hospital bed. When I woke up and opened my eyes, Warren was pointing a gun at my head. Nana, it wasn't a knife, it was a He was pen. frantic. Grilled me non-stop about Skylark. It was the pen that And when he he found out stole I'd from been to the the station Grand before, Architect. forced me to bring him. It's a pen, not the knife, I think. Wait! Those researchers by the door! One of them didn't make it. The other two are still alive. I see. As for what else happened, I Did don't she really just remember. pick the gun? That's all right. I've already formed a rough theory about his motives now. You should rest, Navora. We'll handle things from here. Is that so? Then, Dr. Herson, care to share your theory? Oh, Doctor. How mean. Is that any way to treat a student? I'm afraid identity theft is not in the curriculum. Isn't that right, Grand Architect of the Fraxidus? Since you insist on playing the student, I'll offer a lesson. It takes two to play a game. My, played me for a fool, didn't you? I was going to kill you for a little one-on-one time with Rover. Shame. Regrettable that you evaded what was meant for you. But it's okay. Uncle Warren's dead. Nice and clean. Being caught out in the open, and still he thought he could just vanish from the High Roy and get away with this fiasco. The naivety is remarkable. Anyway, I got back what I wanted too, so I'm a happy girl. On my way here, I kept wondering why you acted so quickly. Didn't fit your usual style of staying in character until the very end. Just as I thought. You were after this pen. Ah, yes, my precious. I couldn't find it anywhere, so it was you who took it from me.
This is the first time someone's taken something from me. Oh, I almost forgot to ask. When did you begin to suspect? If you must know, my suspicions began to deepen during our last visit to the space station, when you feigned that injury. Your acting had been flawless, Grand Architect, but even you cannot mimic what you don't understand. Death itself. To an immortal like you, no matter how many times you die, it's just another lost identity. And I happen to have seen you die before. Oh? Is this why you've had your eye on me all this time? Let me think. Oops. Can't seem to remember. My bad. My real favorite things are the ones that are really old and far, far away. But you're something special, Dr. Herson. You're the first person in forever to ever come this close. Without you, the game in the High Roy would be so boring. So, you get prizes. And I promise, it's right up your alley. Now, for the first one. At the upcoming new solar celebration, among all the lovely students, stands a member of the Fractsidus. I'm so looking forward to that child's performance. Telling us this doesn't do your spy any good. But that's what makes it fun! It's a cat and mouse game. The mouse needs to know the cat is coming, or how else will it run fast enough on its little wheel? To win, you just have to be the hunter. And if you do end up catching that child, that just proves they were useless anyway. That was only the first. What's the next one? The next prize is right here in this data room. You're so smart, Dr. Herson. I bet you've already figured it out, no? I had so much fun on this little trip to the Sky Arc. So, how did you feel seeing the etheric sea? Oh, home sweet home. Your faraway home. The one you can never, ever go back to. Leading you there wasn't all for nothing. The look on your face was the sweetest treat. Let's be sure to have more fun like this in the future. Until next time, you two. I wish you a pleasant past, present, and future. Why did you stop me? You think we couldn't have stopped her here? Yes. My goal was to gather intelligence, not apprehend the Fractsidus' Grand Architect. When we dug up my father's empty grave, I realized that it is no simple feat to find an immortal who leaves no trail. The Grand Architect may appear to act on a whim, but in my observation, that playfulness is just another layer of disguise. There's a purpose behind it. When Nana called earlier, something felt off. Warren is a researcher himself. Why would he need to take a student hostage to investigate a debris field? Even if he did, breaking into the infirmary and letting Nana send a distress call was a sloppy strategy.
Of course I'd be the first person she contacted. So that's why you called me afterwards. I did hear Navora say you've had her in the infirmary all this time. You were keeping an eye on her then. I was waiting for her to show her hand. Until then, it was all speculation. I needed to see her end the act to be sure. Immortal, 1,000 faces. We've managed to gather quite a bit of intel on the Grand Architect. If I'm not mistaken, there should be something more important hidden in this room. Otherwise, she wouldn't have called it a prize. ओ भाई साहब मजा ही आ गया भाई। DC-3.1 रोवर को तो बहुत ही हेल्पलेस दिखा दिया। अब क्या बच्चा है, can't save daughter, got mocked and laughed by practice leader। अब क्या बचा है यार। बट बंदा जा रहा था मारने के लिए उसको, बट उसने रोक लिया, वरना तो बंदा फेल देता। I deliver merciful death. तो लाइक बचा लिया इसने, है ना, तो रोबोट पहले ही देता उसे। हेलो गियो भाई। सही कह रहे कि अच्छा कट सीन मिल जाता। गियो भाई अगर लूक के लिए जा रहे हो तो आपके पास लेनी होनी चाहिए। लूक विद सिग्नेचर एंड लेनी। This lettering. Important है थोड़ा। Do you recall the lead researcher on the Etheric Sea Initiative? लेनी है तो the आप one जा we saw in the सकते हो। hologram during our first visit. But signature के साथ। Professor Junji. Without मत जाना। Yes. Luke with signature होना चाहिए। During his lecture, he mentioned a scholar who had just joined the project, Wei Ying, but his introduction was cut short. लेने मोड़ने हैं फिर जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अहमियत है फिर आपको अहमियत का सपोर्ट पुल करना पड़ेगा जो कि 3.3 में आएगा। The letters of this name are a perfect match with those engraved लूक on के साथ that यूज करोगे ना, तो फिर अहमियत के साथ क्या यूज करोगे, तो फिर आपको 3.3 में अहमियत का सपोर्ट निकालना पड़ेगा। That scholar is the Grand Architect. तो लूक इज अ गुड कैरेक्टर। बाकी थोड़े से रिव्यूज देख लो इसके, इसका डैमेज टेस्ट देख लो, डैमेज सब कैसा है, उसके बाद निकालना। वैसे कैरेक्टर इज गुड, it was pushed back on track. कैरेक्टर अच्छा है। Her involvement influenced the CSC's decision on this project. But everything else about her birthplace, employment history, or academic background is missing. Sounds like another identity borrowed by the Grand Architect. 50-50 है, ट्राई कर लो, मिल जाता है लूक तो निकाल लेना। Seems we've just traced this thousand-faced individual back to an even earlier point in Solaris' history. These records also show Wei Ying took great interest in the CSC and Etheric Sea Initiative during that period. That must be why she infiltrated the Skyark space station. The universe. What secrets is it hiding behind all those infinite stars? I really want to know. And about that footage, no need to explain. The fewer people who know about your secret, the better. It just occurred to me that this wasn't a coincidence. If her goal in the past involved you, एंड उसका थोड़ा सा अपना डिसीजन बनाओ। मेरे पास लुक है नहीं तो इसलिए मैं उतना अच्छे से बता नहीं सकता आपको, बट हाँ अच्छा कैरेक्टर है। आई थिंक टीओए के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट विम्परिंग वेस्ट में आई डोंट थिंक सो वो उतना अच्छा है अभी। हो सकता है बिकॉज उसका अभी बफ नहीं है विम्परिंग वेस्ट में, इस वजह से वो उतना अच्छा नहीं है। बट मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा विम्परिंग वेस्ट का, तब इसका बफ आएगा एंड तब ये अच्छा खासा डैमेज करेगा। I will. Given her nature, it's only a matter of time before we meet again. अच्छा कैरेक्टर निकाल सकते हो। F2 की टीम में आप इसको सानवा के साथ यूज कर सकते हो। Luke with signature and If she enjoys playing games,
then it means she'll follow बट some वही है, rules at सानो least. वाली टीम ज़्यादा जल्दी पावर क्रिप्ट हो जाएगी Otherwise, देन she'd die of लेनी boredom. वाली टीम. Exactly. And as I've said before, sometimes style, personal taste, and ambition can be more revealing than intended. The Fraxidus has more than one base in Solaris, and I'm far from the only one with a grudge or an interest in their activities. Until now, the Grand Architect has been like a reflection in water. She never appears as her own person, only by the faces of the already dead. But now, her fascination with what lies beyond all those infinite stars is a thread we can pull. We can start identifying which schemes bear her signature. In the court of Savante, since our Grand Architect has taken interest in them before, अच्छा होगा अगर trip मैं to लूक पे Mengzhou may be 50-50 worth a नहीं visit. ना The प्रलोभा के court of साथ मेरे Savante हिसाब was से active in Mengzhou? सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो है Just a कंट्रेला. rumor. कंट्रेला They ज़्यादा say a बेटर city होगी was built दैन there under their क्यूआन. direction. क्यूआन को गलबिना There के may be साथ यूज clues करो. there. कंट्रेला के साथ नहीं. I mean प्रलोभा के साथ नहीं. क्यूआन देता है इसको As for स्किल the new डैमेज बोनस, Federation, बट आई थिंक जो you'll likely end up there कंट्रेला eventually if देती you है plan to स्किल counter the डैमेज बोनस Fraxidus's प्लस हैवॉक operations डैमेज in the बोनस वो future. ज़्यादा बढ़िया है. But not now. Things are too complicated बाबू over से अगर there. गलबिना है तो And they क्यूआन handle निकालो. resonators differently. अगर नहीं है तो क्यूआन स्किप Even कर with the दो. Black Shore's backing, going in unprepared would be serious risk. उससे अच्छा है कि आप क्यूआन से अच्छा है प्रलोभा के लिए आप लूक निकालो विद सिग्नेचर. I'll be cautious. नो एक्स्ट्रा डीपीएस हो Before जाएगा Navora, तो did और you अच्छा find रहेगा. any other traces of this Grand क्यूआन Architect से from the बेटर High रहेगा Roy? बिकॉज क्यूआन एक सब डीपीएस भी है Yes. तो उतना There is डैमेज भी नहीं है this उसका. one thing. ठीक है. But it's इससे अच्छा है only कि डीपीएस speculation. निकालो विद सिग्नेचर तो काम हो About जाएगा. how Imeth एक एक्स्ट्रा disappeared. डीपीएस हो जाएगा एंड From what you told me, she died from सही- overclocking सही trying to रहेगा. stop the Thernodian over a decade ago. After that incident, the Academy detected cracks on the Thernodian seal in the depths of Biarter Woods. The damage seemed intentional. You mean? I believe it was the Grand Architect who damaged the seal, and that led to Imeth's death. Lucila's people will handle things here now. We should leave. To where? Let's go clear our minds. You shouldn't sit with this alone. 3.1 निकाला कम्युनिटी से बाहर. रोबर अब सीधे घुस नहीं जाता भाई लड़ाई करने. सोचता है वो कहीं जरूरत है नहीं है. Penny for your thoughts? There's too many to count. Feel like talking about it? Maybe a little. I keep wondering if the choices I made in the past were the right ones. I still don't know why I chose to erase my memories. That one decision cost me my grip on everything. It made me leave so many people behind. You, Imeth, those at the Black Shores, and probably more I don't even know or remember now. I pulled everyone into my grand plan to save the world. And when it mattered most, I wasn't even there. If we can't save Imeth, she'll just be forgotten, left to drift in the void forever. Even if that hadn't happened,
Your path was always destined to diverge from most of ours. You know your lifespan is immense. Barring some accident, most of us will leave this world long before you. Death and goodbyes are a final lesson no one escapes. But for you, it's a question that lingers for an exceptionally long time. You're right. Since you already know that, you should also see that everyone else has already given their answer. You're still the same person you were before. Just as resilient, still bringing hope to others. That's why, after all these years, we're still willing to stand with you. And it's not because you're a supposed savior. It's because you've always been you. And we're not just doing this for you. We're doing it for Solaris, for the future we all chose to fight for. We chose this path ourselves. You have nothing to feel guilty for. One can only move forward by making peace with what's lost. You taught me that a long time ago. In the end, I failed to find my father's murderer. I failed to protect Ryan. I failed to protect my own family. But your brother is still alive. You're alive. There's still hope. You did everything you could. Who knows when I'll wake up next time. Then we'll make a promise, Luuk. We'll see each other again next winter. You'll open your eyes, and I'll be standing right here, just like today. Come now. Enough with that face. Some candy? You always carry candy with you. You sure they really work? As in... It'll help take the edge off and lighten the mood? Your words. That. Honestly, not really. It's become more of a habit of mine. As a boy, I'd have one whenever things felt too big to handle. The sweetness was a distraction. Something to look forward to. Later, after I inherited Naviale, I realized there were still so many things I couldn't control. So I'd eat them to cope. Even after I left the company and set out to follow the Fraxidus' trail on my own, I'd be chewing on one while I watched those who helped me die right in front of me. Still powerless, it seems. So I've come to believe that no matter how strong a person becomes, not everything can be done perfectly. In life, many things are beyond our control. Hold our light inside.
but I still enjoy candy. It reminds me that meeting people is still a gift, even if I know I might lose them one day. If you let grief and anger burn you out, you become obsessed with results. You forget the joy you felt along the way. A little sweetness helps keep the numbness at bay. I'll have one of your candies. How does it taste? Luuk, my chances of saving Armeth, they're pretty slim, aren't they? They are. You'll need a miracle. But you've always been good at making those happen. Thanks for the candy. You're very welcome. What is bro doing? My story was good. कैंडी बेसिए डॉक्टर शुगर बढ़ा देगा. कॉपी ही कर लो ज़रा. डीएमसी का फेल दे रहा साउंड. डीएमसी का फेल दे रहा. हालिया अच्छे. उसने पूछा हाउ डज इट टेस्ट ओवर. आई विल सेव अ बियर. भाई रोबर ने बोला नहीं, शायद कैंडी अच्छी नहीं है इसीलिए. अरे कोड लैंग्वेज था कैंडी में. लाइन मारा है डैम. स्टोरी जब बिल्डअप था फीचर का. हाँ, इसका स्टोरी देखा जाए तो काइंड लोड था. अबाउट इसके बारे में कम पता चला. इसके बारे में हमको पता चला कि इसके फादर क्या करते थे, इसका भाई ये एंड ऑल. बट हमको फ्रैक्चर्स के बारे में पता चला. एंड यू नो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में पता चला कि लाइक रोवर के लिए भी बहुत इजी नहीं होगा अमियत को बचाना. बहुत टफ होगा रोवर के लिए भी. लाइक रोवर को मिरेकल चाहिए एक अमियत को बचाने के लिए. वो मिरेकल कौन होगा, किस फॉर्म में होगा, वो देखना पड़ेगा. कैसे बचाएगा एंड ये भी देखना पड़ेगा. अब ये बंदा यहीं खड़ा रहेगा क्या पूरे टाइम?
ये बंदा यहीं रहेगा क्या? इसका ये स्पॉट है क्या यहाँ पे खड़े होने का? ये यहाँ पे हो सकता है इसका लाइक स्पॉट होगा, लाइक अदर कैरेक्टर्स ये यहाँ पे रहता होगा। लेट मी चेंज द टाइम, क्या पता टाइम चेंज करो उसका ये गायब हो जाता हो। नहीं भाई अभी भी है ये, वो तब बेबी मैं यहाँ से जाऊंगा तब ये गायब होगा आई गेस। जैसे मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करूंगा उसके थोड़े बाद ये गायब हो जाएगा। कुड बी पॉसिबल। मेरे कल कौन ही होगा चीसा, Who knows कौन होगा। आई गेस हमारा इसमें तो काम हो गया यार, सब कुछ ये रह गया है, इसको भी करके ख़त्म कर देता हूँ। बे ये क्या है? अबे क्या दिक्कत है इसको?
कौन कौन है करो एक ट्रैप पे घुसा दो। ओ भाई नहीं तो कुछ और गाचा गेम्स में फ्लाइंग क्रीचर को सब अटेंशन दे देते हैं क्या? मुझे ये बात अच्छा लगा इवन दो वी हैव फ्लाइंग क्रीचर्स लाइक एवी उसको बीच में नहीं लाते इन हैवी मोमेंट्स एंड लोगों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं उसको कैरेक्टर बिल्ड करने। हाँ वो है एवी तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट ही रहता है भाई, वो लास्ट में आता है स्टोरी ख़त्म होने के बाद। अच्छा कुछ हुआ था, अच्छा है ख़त्म हो गया, अच्छा उसको इतना इन्वॉल्व नहीं किया है स्टोरी के अंदर, बहुत कम आता है वो। अगर पूरे स्टोरी का अगर इंक्लूड करें तो मुश्किल से अभी 4% आया होगा पूरे 4-5% स्टोरी में, जितना भी स्टोरी हुआ है मुश्किल से 5% आया होगा अभी। बहुत कम आता है भाई वो।
हो गया भाई स्टोरी, वही बेटर है। तो स्काई आर्कनाइट एंडफील्ड तो डेड गेम अप्रैल 29 से, ऐसा तो नहीं होगा। डेड गेम भाई, वो उस गेम में बहुत लाइक अच्छे ग्राफिक्स है भाई, स्मूथ भी बहुत है वो, ऐसे थोड़ी ना डेड हो जाएगा। आर्कनाइट का अकाउंट सेल कर दो, 5 RS का ब्लूप्रिंट। एंटी कहाँ जाएगा, एंटी खा जाएगा कच्चा विद गारंटी बैनर्स एंड नो सो मच फार्मिंग फॉर कैरेक्टर इकोज। फार्मिंग तो है उसके अंदर भी, बट हाँ उसके अंदर वैसा है, गारंटेड स्टैट्स मिलते हैं उसके अंदर, लाइक स्टैट्स आपको पहले से मिलेंगे, बस आपको डेवलप करना है, तो वैसा है। ऐसा तो आर्कनाइट के अंदर भी है, वही सेम चीज़ है। बट हाँ वही है, जिनको लाइक एंटी का ग्राफिक्स अच्छा नहीं लगेगा वो आर्कनाइट खेलेंगे, जिनको फैक्ट्री सिस्टम पसंद है वो आर्कनाइट खेलेंगे। एंड हो सकता है कि एंटी उतना स्मूथ ना चले फ़ोन में कंपेयर टू आर्कनाइट, लोग इसलिए आर्कनाइट भी खेल सकते हैं। बट हाँ जिनको गारंटेड पेटी सिस्टम चाहिए, कार्स चाहिए, बाइक्स चाहिए, बाकी सब चीज़ चाहिए, तो उनके लिए वो एंटी ही है। एंटी भी लाइक ख़त्म हो जाएगा जब अनंता आ जाएगा, एंटी का भी गेम ओवर जब अनंता मार्केट में आएगा तब। कैजुअल तो नहीं खेलेंगे आर्कनाइट, वैसे बोल रहा हूँ कैजुअल वही, वैसे आर्कनाइट ने इजी कर रखा है कैजुअल्स के लिए भी देखा जाए तो। लाइक आपको जो फैक्ट्री सिस्टम है वो आप अपने किसी दोस्त से ब्लूप्रिंट लेके पूरा चिप दो, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड अपने आप चीज़ें होती रहेंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। बाकी रह गया बस सेम चीज़ है, इकोस फार्म, लाइक अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको अपना फार्म करना पड़ेगा, इकोस का कोई झंझट नहीं है, आपको डोमेन में जाके वो इकोस फार्म करना पड़ेगा। वेपन्स के लिए आपको वो एनिमीज डिफीट करने पड़ेंगे वेपन्स के इकोस के लिए, तो उतना फार्मिंग नहीं है उसके अंदर भी, बट फार्मिंग सब तो ठीक है। सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो है वो है उसका पेटी सिस्टम, तो अगर कोई नहीं खेलेगा वो उसके पेटी सिस्टम के चक्कर में नहीं खेलेगा, बस वही एक ही रीज़न हो सकता है पेटी सिस्टम। बाकी फैक्ट्री सिस्टम भी हो सकता है, बट फैक्ट्री के लिए आप ब्लूप्रिंट यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई नया रीज़न आया 1.2 में या 1.1 में, कोई नया रीज़न आया उसके अंदर फैक्ट्री सिस्टम है, तो लोग क्या करेंगे, लाइक किसी ने बनाया फैक्ट्री सिस्टम उस रीज़न के, उसका ब्लूप्रिंट लेके चिप देंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस हाँ वो चीज़ें अनलॉक करनी पड़ेंगी जिससे वो फैक्ट्री सिस्टम में इक्विपमेंट्स बन पाए, बट वो अनलॉक हो गया तो उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ब्लूप्रिंट लगाया, काम हो गया, खेल खत्म। तो उतना कुछ नहीं है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है उसका पीटी सिस्टम, बैनर सिस्टम बहुत बेकार है भाई, घटिया रद्दड़। अगर उससे किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक आर्कनाइट का ऐसा कुछ है अंदर जिससे दिक्कत होनी चाहिए। गेम प्ले वाइज सब कुछ ठीक है, स्मूथ भी है, ऑप्टिमाइज्ड भी है, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बस वो एक बैनर रीज़न हो सकता है। सेकंड हो सकता है फैक्ट्री सिस्टम, जिनको पसंद नहीं है, बट उसके लिए भी एक तरीका है ब्लूप्रिंट वाला, तो उतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ब्लूप्रिंट मिल जाना चाहिए एंड बाकी लगा सकते पूरा सेम फैक्ट्री सिस्टम, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मुझे भी जो नया रीज़न खुला है उसके लिए ब्लूप्रिंट चाहिए, अब मैं देख रहा हूँ भाई कि कहाँ से लूँ, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर, बिकॉज आर्कनाइट में उतना अच्छा सब खेलने नहीं वाला, स्टोरी के लिए खेलूँगा। मेरा मन उठ गया भाई उस कैरेक्टर के चक्कर में, इसकी दिमाग ख़राब हो गया। The moment at hand. तो मुझे लेवल अप करने हैं कैरेक्टर्स को, 80 लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए मटेरियल्स लेटेस्ट वाले, और उनके ऊपर गियर भी लगाना है, तो उसके लिए मुझको लेटेस्ट मैप के ऊपर वो लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कहाँ से ब्लूप्रिंट लूँ, चिप दूँ उसके ऊपर, मुझे इसमें दिमाग नहीं लगाना। वो भी ख़त्म हो जाएगा जब मोबाइल पे 100 GB का हो जाएगा, वो तो है भाई इशू, हो जाएगा आई गेस, ऑब्वियसली बात है, वो उनका ही दिक्कत है, देव्स का ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ता जाएगा लोग डिलीट करते जाएंगे वुवा को, एंड लोग फिर नहीं खेलेंगे वुवा, तो लॉस उन्हीं का ही है। अब मेरे साथ आई मीन ऐसा होगा नहीं पॉसिबल, बट हो सकता है कि जो पैसा वो कमाते हैं देव्स, वो उन्हीं से कमाते हैं जिनके पास अच्छा खासा डिवाइस है। जो ऑलरेडी बेकार डिवाइस में खेल रहे हैं वो लोग पैसा लगाते भी नहीं है गेम के अंदर,
ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी वो उतने लाइक बहुत ही लो डिवाइस पे खेल रहे हैं, उनके पास डिवाइस के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या ही गेम में लगाएंगे। तो जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं वो सारे अच्छे खासे डिवाइस वाले से ही कमा रहे हैं, ठीक है जिनके में अच्छे खासे चल जा रहा है वुवा जो बजट गेमर है, लो डिवाइस है, उनसे वो कोई पैसा कमा भी नहीं रहे, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई गेम को हम इतना बड़ा कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे, जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो हमको पैसा देते हैं एक्चुअल में वही खेले और जो F2 भी फ्रेंडली है वो धीरे धीरे कट ले रास्ता, निकल जाए भाई ठीक है, हमारे सर्वर पे भी लोड हो रहा है, उनके चक्कर में हमको ओवर टाइम भी काम करना पड़ रहा है, डिवाइस उनका लो है और काम हमें करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि मैं इसकी गेम का साइज ही इतना बड़ा कर देंगे उनके डिवाइस में चलेगा ही नहीं, वो खेलेंगे ही नहीं, कंप्लेंट्स आएगी ही नहीं पॉसिबल है। मेरा ओनली हेलो एलुमिनाटी भाई, लुक पुल किया नहीं किया, मैंने स्किप कर रहा हूँ, इतना पुल्स ही नहीं है बस भाई। आर्कनाइट में स्टैंडर्ड बैनर की पुल्स भी नहीं है, लाइक वुवा एंड होयो गेम्स पे शॉप रीसेट में तो है एटलीस्ट, वही तो दिक्कत है। नहीं स्टैंडर्ड पुल्स तो देते हैं ना वो लोग, 5 पुल्स देते तो हैं, देते हैं 5 पुल्स, जब भी कैरेक्टर का बैनर आता है तब आता है वो। हाँ वो कह सकते हो यूनिवर्सल कूपन नहीं देते वो, लाइक पर कैरेक्टर के बैनर पे देते हैं, वैसा वाला सिस्टम है। लाइक कैरेक्टर का बैनर आया फिर आप 5 पुल परचेस कर सकते हो उस कैरेक्टर के बैनर का, जो यूनिवर्सल पुल्स होते हैं वो नहीं देते वो लोग, वो देना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जितना भी इनका सिस्टम है बैनर के अराउंड, भले वो पुल हो पिटी हो, सब घटिया है, ठीक है, सब घटिया है। वेपन बैनर भी इनका घटिया है स्टैंडर्ड का, कैरेक्टर बैनर भी घटिया है, जो पुल्स देते हैं वो भी एकदम घटिया है, पिटी सिस्टम भी घटिया है, ठीक है। मैं तो किसी यूट्यूबर से कॉपी किया था ब्लूप्रिंट। अच्छा मेरा ओनली 160 GB है, फ़ोन ओनली 6-7 पैच, मतलब 500 बार ले रहा था आराम से, 300 प्लस 30 स्टोरेज 20 पैच। अरे असल में उनको हवाई जो ब्रांड है अच्छी से, दे थिंक एवरी कंपनी विल बी सेम, नहीं है रीसेट में नहीं है, मैंने देखा था है, एक सेकंड देखना पड़ेगा, बस लिमिटेड बैनर पे। You can only get when there's a new map. सब घटिया फ्री फायर खेलो सब घटिया है। अब मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं यार, आर्कनाइट ही खेल लेते हैं इसकी, और क्या। और करूँ भी तो करूँ क्या। अब आर्कनाइट ही स्टार्ट कर लूँ। आई थिंक मोबाइल पे आया, ट्राई किया रेसिडेंट इविल 6। मोबाइल पे मैं क्यों खेलूँगा RE6 मोबाइल है ही ना मेरे पास उतना अच्छा, चलेगा ही नहीं। The moment at hand. एनिमेटी भाई मेरा डायलॉग ले लिया, फ्री फायर खेल लो भाई, मेरा फ्री फायर खेलने से अच्छा गेमिंग छोड़ देता हूँ, सब घटिया फ्री फायर खेलो। नजर भाई बोलो फ्रेंड्स ना है, आर्कनाइट में स्टैंडर्ड बैनर पे बस तब मिलते हैं जब न्यू मैप आएगा, अभी के लिए ऐसा है वो बोल रहा था। अच्छा उसका वो स्टैंडर्ड का बोल रहा है। हाँ आई मीन स्टैंडर्ड का वैसे क्या ही फ़ायदा भी क्या है, क्या करोगे स्टैंडर्ड का,
हाँ बट ये भी हो सकता था, ये भी अच्छा इन्होंने पता है क्यों नहीं दिया होगा स्टैंडर्ड पे, बिकॉज जब स्टैंडर्ड पे पुल करोगे उससे भी आई थिंक हमको वेपन का करेंसी मिलेगा, है ना, तो उससे क्या होगा हमको बहुत ईजिली वेपन मिल सकता है। तो इन लोगों ने जानबूझ के वो स्टैंडर्ड वेपन के पुल्स नहीं दे रहे हैं जिससे हमको लिमिटेड पे पुल करना पड़े एंड फिर उससे हमको वेपन की करेंसी मिले। समझ रहे हो, इसके एक नंबर की चालाक गेम ये है कंपनी वाले। रेनबो सिक्स ना मैंने नहीं खेला, पीसी पे नहीं खेल लूँ मैं रेनबो 6, पीसी पे है तो मैं मोबाइल पे क्यों खेलूँगा, पीसी पे भी फ्री है, फ़ोन पे भी वही है। आई मीन जिसको अच्छा लग रहा है खेलो, आई मीन बहुत पुराना गेम है, अब फ़ोन पे लेके आए हैं वो लोग, क्या ही फ़ायदा। हाँ रेनबो 6 में डाउनलोड किया था, कोई नहीं है और डिवाइस भी नहीं है, आई मीन वेपन बैनर के ये फुल्स, वही ना वही रीज़न है। एंड वैसे मेरे पास डिवाइस नहीं है उतना अच्छा कि मैं रेनबो 6 लेटेस्ट गेम खेलूँ। रुको वही खेले स्टार्ट करते हैं, आर्क नाइट स्टार्ट करता हूँ बिकॉज इसका तो गेम हो गया, अब मेरे पास लूक तो है नहीं जो मैं उसको टेस्ट एंड ट्राई करूँ, तो आई मीन बंद ही कर देता हूँ इससे अच्छा। तो वदरिंग वेव्स आर्क नाइट थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा मुझे लाइक वो बनाना है ब्लूप्रिंट, तो आज बना के ख़त्म करता हूँ। मुझे लेवल गेयर्स बनाने हैं कैरेक्टर्स के लिए, मुझे अभी तक जा ही नहीं मिली है, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, मैं लास्ट राइड की टीम बना नहीं रहा हूँ क्योंकि जा ही नहीं मिल रही मेरे को, अब लग रहा है भाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मुझे, उसको एलिश को लेवलअप करना पड़ेगा, जा ही मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट लोग उसको इसको भी यूज़ कर रहे हैं, पढ़लेखा को भी यूज़ कर रहे हैं लास्ट राइड की टीम में, अब वो पता नहीं कैसे काम करती है, आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा, फिर मुझे पढ़लिका को लेवलअप करना पड़ेगा बिकॉज जाही तो मिल नहीं रही है। एलिश समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। मैं भी सोच रहा डाउनलोड करने की ट्राई करूँ, 1.5 आवर का स्टोरी था ना, आई थिंक सो। पॉग है नहीं, पॉग सुना है, पॉग प्लस एडमिन स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हाट द हेल, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, आर यू सीरियस, ये क्या बोल रहा है? बट पॉक को उसका सिग्नेचर भी तो देना पड़ेगा, पॉक को उसका सिग्नेचर देना पड़ेगा, फिर एंडमिन को उसका सिग्नेचर देना पड़ेगा, फिर उसके अबे क्या हो रहा है ये? फिर पता नहीं 2 भागे टीम मेंबर्स कौन होंगे, वो अलग, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो ऐसे ऐसे मैं कैसे करूँगा लेवल अप, 4 न्यू मेंबर्स को लेवल अप करना पड़ेगा मुझे, कैसे करेगा काम। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, एक और चीज़ बताऊँ, लाइक एक और चीज़ बताता हूँ, तो मैंने क्या किया था, गलबर्टा के बैनर पे मैंने 60 पुल कर दिए थे, ठीक है 60 पुल, समझ रहे हो 60 पुल, एंड गेस व्हाट, yeah because they both can stun enemies fast। अच्छा फिजिकल टीम स्टैगर फास्ट करते हैं। गेस व्हाट क्या हुआ होगा, मैंने गिलबर्टे के बैनर पे 60 पुल किए थे। Another day of beautiful sounds. नहीं, मैंने लेवी के बैनर पे पुल किए थे 79, वो तो चले गए थे, ठीक है वो चले गए। फिर मैंने गिलबर्टा के ऊपर किए थे 60 पीटी, ठीक है, एंड परसों इवोने का बैनर आया,
एंड वो 60 पिटी भी गायब। कैन यू इमेजिन कि वो 60 पिटी भी गायब हो चुका है। वापस से मैं 120 पिटी पे आ चुका हूँ, ठीक है, वापस से आ चुका हूँ मैं 120 पिटी पे। तो मतलब अगर आप बैनर पे पुल कर रहे हो तो आपको 5 स्टार मिले या ना मिले, आपका पीटी रीसेट हो जाएगा भाई। 6 स्टार मिले या ना मिले, आपको 80 पीटी से पहले या 80 पीटी के बाद जो भी है, आपका बैनर पूरा रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये हो रहा है, ये मतलब क्या ही बोला जाए इस गेम को अब। मेरे पास अभी 119 की पिटी बाकी है। मुझे एक पुल किया है मैंने अभी तक, इसको जो मुझे मिला था फ्री में वो पुल किया मैंने इसके ऊपर बस, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो कि मेरे टोटल 79 + 60 यानी कि 80 मैंने अभी तक ये भी इसके ऊपर एक कर रखा हूँ। 80 + 60 कितना हुआ, 140 पुल किया है मैंने, 140। और अभी तक मुझे एक भी लिमिटेड कैरेक्टर नहीं मिला है, एक भी। क्यों खेलने का मन करेगा मेरा इस गेम को। मतलब 140 पुल हो गए बट एक भी लिमिटेड कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। इसमें से ये ले लेता हूँ। हो गया। हाँ ये तो रहा, ये परचेज कर तो सकते हैं हम। ये वाला अच्छा वो स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे ना। हाँ ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये जब भी बैनर रीसेट होता है तो हमको 5 पुल मिलते हैं। उड़ा दूँ क्या मैं इसके। यहाँ पे किस काम तो है नहीं, इतना लक मेरा अच्छा है नहीं कि मुझे 5 पुल में ये मिल जाए। अबे बे यार, कि मुझे 5 पुल में ये कैरेक्टर मिल जाएगी। बट आई मीन पुल्स वेस्ट होंगे तो होंगे आई गेस। एटलीस्ट मुझे वेपन के बुल्स तो मिलेगा। और मुझे जाही दे दो भाई, ये दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे चाहिए भी नहीं अभी, ये बाहर में जाइए, जाही दे दो बस एक। एक पुल और करता हूँ। मिल जाएगा ये वो ने 100% कर दो ये पुल। 100% क्या 100%? एक पुल रह गया। हट यार, वो दे देते यार भैंस की तुम्हारी। हट शुरू करो। हट गलत बात है यार, ये दो दे नहीं रहे मुझे यार। जाही एक भी जाही नहीं दिया इन लोगों ने मुझे। मैं इसको परचेज कर सकता हूँ बट मुझे 200 चाहिए। ये 200 ये एक के लिए मुझे 200 चाहिए। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? और कहीं से पुल नहीं है ना, बाहर में जाए whatever।
ये लोग 15 दे रहे हैं वो भाई, 15 500 चाहिए होता है एक पुल करने के लिए, और ये लोग 15 दे रहे हैं 15। इनकी भाई साहब, अचार डालो मैं उस 15 का, क्या करूं मैं उस 15 का? Where are we headed? वैसे नासुकी जरा मुझे कोड शेयर करना, मैं यहाँ पे कोड डाल दूँ अगर कोड है तो आपके पास। ये कोड ये बनाना पड़ेगा एंड मैं नहीं बनाना चाहता, फालतू का टाइम वेस्ट है इस फैक्ट्री के ऊपर, मैं नहीं करना चाहता। कोड है आपके पास? है तो कोड दे दो मुझे। मुझे इसका स्टोरी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। बोरिंग गेम। जाऊंगा कैसे यहाँ पे? व्हाट द हेल? हाँ हाँ नहीं तो वही बोरिंग लगने लगेगा। क्या चीज़? नहीं तो वो मतलब उससे पहले का चैट गायब हो गया। डीएम क्या है? अर्ली का फैक्ट्री का देख ले लो। अच्छा देखता हूँ मैं। डिस्कॉर्ड लैग करने लगेगा। Feels like the weight of the entire world has come down at me. My knees, especially.
वुलिंग में 2 बेस है, मेरा तो एक ही बेस अनलॉक हुआ है। What the fuck? मेरा तो एक ही बेस अनलॉक हुआ है, मैं 2 बेस कहाँ से अनलॉक करूँ? हैं? मेरा तो एक ही बेस है, दूसरा कहाँ है? इसमें तो 2 बेस बोला है इसने। डीएम क्या है? 14 पुल्स। 14 पुल्स पहले तो उसका है, तुमने बहुत लेट कर दिया। मैंने कर दिया लाइक मैंने डैगर भाई के स्ट्रीम पे देखा था, उनको भी नहीं मिली लेवी, देन आफ्टर गोइंग टिल 20 पिटी मिला। अब 2 बेस स्टोरी प्रोग्रेस करो मेन स्टोरी से और क्या। अच्छा मैं लाइक वो 50-50 हारने के बाद मेरा मन टूट गया था भाई सच में। फिर मैंने खेलना लिटरली बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट क्या लगे, मुश्किल से पहले मैं 8-8 घंटे खेल रहा था, फिर मैंने डाउन टू द आधा घंटा कर दिया, 15 मिनट कर दिया। डेली भी नहीं करता मैं तो भाई, डेली करना भी छोड़ दिया मैंने। बाढ़ में जाए, मैं नहीं खेलना। अब वो ठीक है, नहीं मिली कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फ्यूचर में जो कैरेक्टर्स आएंगे 1.2 में निकला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ऐसे ही है। Doesn't matter that much. Qianxu Yanning and Bai Shuang are here. We meet again. I'll offer assistance in troubleshooting to ensure the success of this operation. Hi, everyone. कितनी स्टोरी बाकी है वैसे यहाँ से? उनको 3 पॉग मिला, उनका क्या होगा? चलो ठीक है, आई मीन बढ़िया है। पॉग भी तो अच्छा कैरेक्टर है आई गेस। I think he got some new orders from Captain Me. यहाँ के बाद कितनी स्टोरी Another बाकी white है? tide has emerged. लाइक आधा घंटे की स्टोरी बाकी है, उससे ज्यादा की? The tides are so frequent it almost feels like a constant thing. 1 घंटा? Let's focus on constructing the Oh, forge hell of the nah. sky first. We must deploy the Sheernite production line ASAP to resolve the Wuling urgency. And we shall observe a brand new method for Sheernite production. This learning opportunity doesn't come often. Pay close attention, Bai Shuang. Yes, ma'am. Let's begin, Entman. ये लोग फिर से मुझे अब ये देंगे। अरे नहीं देखना मुझे।
क्या करना है अब? अरे बताओ भाई. What? Am I supposed to connect it? What? पानी कहाँ है इधर? ए भैंस की भैंस. इसको पानी लाके दूं मैं? अबे भाई, पानी कहाँ है इधर? ये पानी बनाता है? नहीं. पानी कौन बनाता है? इसको पानी चाहिए. What? यहाँ से पानी लेके आऊँ मैं? हाँ? और उसके बाहर नहीं जा सकता. वन आवर प्लस समथिंग लाइक तुम करो स्टोरी, मुझे कुछ काम करना है. ओके ओके, करो करो. क्लीन वाटर, क्लीन वाटर. We can now use the Forge of the Sky to produce Shironite.
This just makes Shirenite? With the most basic raw materials? Huh. Shirenite is an originium derivative. It's basically protocol originium with additional properties imbued by the forge itself. This process is truly effective. Ah, sorry, I got a little carried away. Our next step is to verify the effectiveness of the newly produced Shirenite. Enman, remember the place where we found the blight? If this batch of Shirenite can reset the entire Shirenite flow control node... Shirenite flow control node? I'll explain it to you when we get there. The Shirenite flow control node is up ahead. Place some Shirenite in it. Try activating the Shirenite flow engine. You can use the device as long as you're within the purification radius of the Shirenite flow control node. Watch it melt away like ice in summer. This device is so effective. So, why didn't we use it before? Well, the Enman's jet drone used to be malfunctioning as well. Our Shirenite production was barely enough to cover the Tianshi pillar. We were forced to abandon the others. But things are different now. Injecting bits of Shirenite into these Shirenite facilities can bring them back up and running. It's just like a creek flowing past the fields, irrigating the fertile earth. Perhaps Enfield can truly help us to... The alarms? What is it, Funky? Apologies, but we have an emergency. Has the Forge of the Sky been deployed? It's done. We also verified the first batch of Shirenite produced. Is there anything else we can do? We just completely lost the data link to the monitoring center. The center constantly monitors ambient depth readings. It's our first line of Blight Tide defense. It plays a key role in monitoring Blight activity. If we lose the monitoring center, the city's early warning system will be compromised. Angeloy and other enemies can be dealt with, but a large-scale Blight event... It'll serve as a field test for our Shirenite. Won't this affect our new production line? It'll be all right. Well, I have faith in Enfield. Mifu will be joining you. Yenning, help Enfield gather performance data of the Forge. Endman, we're counting on you to restart the monitoring center. A Blight monitoring center suddenly gets overwhelmed by the Blight without giving off any warning. I'm not sure. They completely dropped off our radar after we entered Wuling City. However, the intensifying Blight activities must be a direct consequence of the damaged Tianshi pillar. Enough talking already. Let's go and deal with the problem. Now! Bai Shuang and I will take care of this place. You just head to the monitoring center. True value found nowhere else. Witching hour. That doesn't sound right.
we meet up, we will... Let me go! Damn you, coward! Hey! Did I just hear Tong Tong? Huh? The dark mask! Quick! There's plenty of you against her! Captain Me, what's happening? This kitty punk's not bad for a combatant. So I'm considering recruiting her to fight the Angelord. Put me down! Hey! You just gonna stand there and watch her brutalize me? Dirty cheats. Hey! I agree to help! Hello? Once this is over, you gotta let Dark Mask off! The sooner we get this done, the better. I gotta head back to the stockade after this. So why are you headed to Wuling City on your own, Tong Tong? Cause I'm worried about my swarm brother. Can I do that? Why do I get the feeling that you're always getting... Alright, we got everyone already. Let's set off. Those damn splatters made it all the way here. Sonic freeze! Be gentle, Mr. Jolly! Sonic drum, Wuwa! Oh, dearie me! So many splatterlings. And right outside Wuling as well. Stop mumbling and get to work. Otherwise, I will make you wipe the watchguard dorm windows afterwards. Never! I'm no window wiper. Oh, but you are pretty good at losing and wiping. How many times already? 7? 8? The watchguard bird and bees know your face already. Huh? I won more battles than I lost! Stop feeding Dark Mask with your nonsense! Hey! Why don't we have a proper duel? Dark Mask will be the judge. Don't have time for your games. We are trying to carry out a proper mission. Ooh, you scared? If you refuse, you concede defeat. That means you owe me a dare. And if you lose this fight, you will carry food to my stockade. 300 caddies? Nope! Make that 500! On your own! I can even carry the marker stone to your place, if that's what you want. Anyway, you've set yourself up to fail. Hey! Hey! The bet is all ready! Even if you didn't say nothing about my dare if I lose! You won't be running away. I will think of something proper. Eventually. Wonderful!
muscle. There's no end to these buggers. Man, what? Don't charge straight into them. Scared? That means you're loose in the back. Ha! In your dreams. You're going down. Sonic Boom, move on. Stop fighting. Shatter I would never pull that off. Don't go too far, Mr. Gully! You're going down! Absolute poundage! Chief's got a final left today. Hey, mad woman! How many splatters did you squish today? 5. 1, 2, 3. It's a tie! Well, at least this road is safe to travel again. Dark Mask, what is Tianshizhong? What is the walking lightning rod asking you to do? I saw a burning comet smash into the city. You did that, right? What's that for? Oi, little feline. Yeah? You want to backstab me? The opposite. We are headed to the monitoring center on official business. I can't spare anyone to keep their eyes on you. So go on, scamper back home. You going where? The monitoring center? Tales of Tianshi almost got themselves killed at that place. I can't win this duel if you get yourself killed. And I demand 1,000 Katie's! Plus rice, oil fees, and a six! Whatever. Is a real hassle. I say we keep pushing and get it fixed in one go. This blight tide looks really bad. Look at what it's doing to the environment. This place reminds me of the stockade. Take care of the blight. I will check on the others. From the severity of the blight, it's like it was meant to destroy this place. It's possible, but... Is something
trying to dismantle the monitoring center from the inside? We call it a Tidoclast. It's an annoying Angelos. That thing was the reason why the watchguards were forced to flee the monitoring center. I didn't expect it to settle down here. Sounds like a big bad buggerloid. Maybe we should just skirt around it? No. We can't leave it in peace if we want to restart the monitoring center. I will go and terminate it. If you're scared, you can go home. I'm scared? Just a plus, says the splatter. Alright, it's on. We'll see who squishes this one first. That's a bit terrifying. The Tianshi initiated their contingency plan and sealed the exit before withdrawing. The thing should be trapped for a while. I know the architecture. I will go take a look. You take the front approach. We will figure out how to get into the sealed sections. Hey, wait! Why are you doing this on your own again? This splatter sounds really angry. Dark Mask, we best catch up to her. I just want that 1,000 caddies of food. Another day of beautiful sound. Not bad, Dark Mask. A true talent like you should get. I wonder how Mifu is doing. She just ran off on her own. She'll be all right. Let's just get rid of the splatters and chase up to her. You look really worried, Tong Tong. Nah, it's all about 1,000 caddies, prime cuts and things. I gotta protect my investment. Oh, I gotta ask for salt as well. Sonic Boom, Bye-bye! You are fast. Seems like you can handle all the devices easily, and then... Guess you think skiing hard for safety? Can't afford to wait for the rest of you. I'm heading over. Hey! Dark Mask, quick! We gotta help her! The gate! How do we open it? The activation switch should be nearby. Let's search this place thoroughly. Enman, over there! A Shiranite full control node. We can probably use it.
हेलो जनो भाई, नहीं मैंने पुल नहीं किया, स्किप कर रहा हूँ मैं उसे। She's up ahead. And she started the fight already. क्या वो स्टोरी खत्म हो गया क्या? Why is she getting so क्योंकि मेरे पास पुल्स नहीं है, पुल्स नहीं है इसीलिए। You guys. Fine. I could use some help. Distracted. Don't let it get too close to the core facilities of the monitoring center. Time to get in a real fight. Matter's huge! Don't go too far, Mr. Dolly! Thanks for swinging by. Since we squished this thing, we should be able to restore the monitoring center. Hope the instruments are undamaged. You're injured, Mifu. Try not to move too much. Just a flesh wound. Ain't that bad, really. It's over, Tantal. We're all safe. हर स्टैचू नहीं मिल रहा, कहाँ पे? रेसिडेंट इविल में लोगों ने स्टोरी नहीं किया है, यहाँ कुछ ने। और पता है क्रिस्टोफोरो लूक का भाई है। आई थॉट सो। अच्छा हुआ मेरा जैसे स्टोरी ख़त्म किया, अच्छा नहीं लगा वो कट सीन, बड़ा मस्त था ग्रेनाइट जब आया था। हाँ सारे देखो, सारे जगह पे देखो, वहीं होगा, कहीं मिस कर रहे होगे, कोई कोड वोड के अंदर होगा या कहीं कुछ होगा, चेक करो, उधर ही होगा। ढूंढो अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से ढूंढो। कभी हो सकता है किसी लॉकर में हो, यू नो, या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ तुम गए नहीं हो, या जितने भी जगह रेड दिखा रहा वहाँ पे देखो जाके, वहाँ कहीं होगा। हो सकता है वहाँ कहीं छोड़ दिया होगा तुमने। I wasn't being scared. You're hurt? I got some meds on me. It would be a joke if my headstone reads, "Killed by Tantan's medical malpractice." I never did that! What? Who says are you on, Dark Mask?
I was reckless back then. That Anglos was a serious threat and wounded many of our guards. I lost my cool. Cut your excuses, warmonger. You're just itching for a fight with a big back splatter. Endman, let's take a look at the core facilities. Endman, monitoring center core facility. At least 80% of the facilities are back online. The monitoring center is now assessing and monitoring blight activities for Wuling again. Really appreciate your help. Boss will be pleased to hear about this. Can I ask you for a favor? Don't tell her that I've been wounded in this mission. So, little kitty, why so quiet? That thing got your nerves? I just don't feel like talking. Look at you, slugging for those Wulingers all day. Almost got yourself killed. Drones should be worrying about you more. Unlike you, she actually has plenty of other things to worry about. City Viceroy and a stockade chief aren't that different, you know? Whatever. Since I finished what you asked, I believe you're even. And this is the terminal of the monitoring center. Before we head back, we should use it to test the system first. The monitoring center is working again. That will put her mind to ease. Thinking about my boss. Now I got a good reason to persuade her to take a break. The Shiranite production project worked out, right? And the monitoring center is taken care of too. You know the search inside the city. She won't give herself a break unless we achieve something positive. In any case, I sincerely appreciate your help back there. I wish. You sound even more desperate than I do. However, I can't help but feel something's wrong with Tantan. Maybe it has to do with the stockade. Try asking what's on her mind, if you have the time. There are things I can't help her with. Dark Mask, on the other hand, might work wonders. That little feline made it sound like I lost the entire arm. There was a time when I kept ticking off the boss to battle things out. I endured far worse than this. Sparring with me was probably her only way to blow off some steam and forget everything else. Really miss those days. I wonder if I'm still able to catch her leave our arts.
That little feline made it sound like there was a time when sparring with me was probably... really missed those days. Total success. So, is it time to head back yet? Yes. Mifu and Tang Tang are waiting for us. Let's go. Wanna head back with me and talk to the boss? Mifu, Tang Tang is... Dark Mask! Oi! I gave her a chance to sleep away. Yet she's back for more. Thanks, Dark Mask. I'll head back first. Gotta report to the boss. Nice, Dark Mask! You ended up choosing my side! So, if something bad happens to the stockade, would your Anfield fam help us? Something happened to Qingbo Stockade? No! The stockade is fine! It's about a fam's future safety. If I can get some of your icy creamy factory, everything would be super fine. The blood and splatters are getting worse every day. My stockade won't hold out forever. And someone owes me 1,000 caddies of food! Looks like you need our AIC factory solution. Yeah, but I gotta convince everyone to stock it first. Like Broly and many in fam don't like outsiders. Then it's a deal. I'll get my fam sorted. Stay tuned. Perlica, you were planning to help Tang Tang all along, right? Indeed. It's been on my mind ever since our first meeting. They found a way to survive upon these lands. Alas, the enemy has arrived. If Neferith makes her next move... Agreed. Let's head back and talk to Tianshi Zhuang. Thank you for helping out. We can now investigate the Blight Tide anomalies and trace Neferith's activities. Endman, what do you think their next step is? Mifu, Tang Tang supported our last operation, didn't she? Wow! I thought you wouldn't tell Tianshi Zhuang about that. Why wouldn't I? This is the time we should be rowing the same boat. 10 years later, the scars from the disaster still divide us from the stockade residents. Trust was the first casualty. However, Enfield presents us with another opportunity. Enfield will seek balance between Wuling City and Qingbo Stockade. What we need is more allies, not adversaries. Tianshi Zhuang.
What about her? If both Wuling City and Qingba Stockade are in trouble, then she's... The primary objective of Yinglong's Special Task Force remains in the North Wuling Exclusion Zone. Though understaffed, they did promise to offer any help they could afford to Wuling. HAS is already doing its best to reinforce this city. However, the overall situation on Talos 2 isn't looking too good. This is starting to feel like what happened 10 years ago. Set your worries aside. We'll get through this together. Indeed, we shall. This is just the beginning. Tong? I got my big bird to agree! We've prepped a pretty plot of land at a stockade! Oh, before I forget, the team sure fixed that broken road between our stockade and Wuling City. And we're giving you a super official invite! I super dare me to say no to that! People say that the essence shall reveal itself. Is there something I missed? I'm no good in long battles. Please, finish it quickly. Leave it to me. Is it spinning? Spy spotted! Look there. Could be worth the trouble. The landslide has been cleared away. The bridge is still out, though. Tung Tung? Oh! I'm here to pick you up! This isn't another trick of yours, right? Of course not! Look! I'm genuinely concerned for all of you! Get his bridge fixed, then we'll head to the stockade together! Come on! Just get moving already! I don't want to be seen by those pesky watchguards! Woo! We can finally use this road. So, what was your plan for this road? This is the only path if we need to borrow more food from the city. I fear supplies at the stockade are dwindling. Totally. That's why I really need to get 1,000 caddies of food. Let's save this discussion for stockade. Time to formally introduce Dark Mask.
unsheathed, its light unleashed. Do we really? Haha, the Spree Chief is back! And... Ah, it's you! Chief told us how you totally embarrassed the Woolingers, and they got down on their fours to beg you for help. Alright, fam! Settle down and listen up! I have specifically summoned Dark Mask home to help repair our stockade. Everyone knows that our Dark Mask is a true professional. Splatters? Light? With Dark Mask around, you'll be gone in a poof! Dark Mask? I never knew you were so popular here. This is actually making me curious. Now I really want to hear Tong Tong stories about you. Of course. The first step is to verify the deployment site. Come with me. I got a perfect place for you. Spacious and quiet. How did you find this place? So I was just napping. Oh, wait! I was doing some serious surveying of my turf. Flooded during my patrols. The AIC factory will help you construct the facilities you need. Let's start with a farm complex. I know we ain't as loaded as Wuling. We don't really have much to offer. But here, take these. With you and the AIC factory around, I can finally let the fam handle themselves. Just talk to Hula if you got problems. Well, some of our people have been sneaking in and out of the stockade. Something funny is going on. My burrow's always busy, so I got looking into myself. They probably have side jobs or something. The stockade isn't doing too well, you know? Whatever. If something's up, I'll holler at you at once. And once I get fort tidied up, I'll take you on a tour of our ancestral spring. Promise! He accepted. But he did not agree. Now, how can we proceed without incurring too many sacrifices? Administrator.
गाइस तो फैक्ट्री की चीज 2D में कर फास्ट है। अच्छा बंदे के पास मटेरियल्स खत्म। हाँ मैंने वो ध्यान दिया नहीं ना उतना, जो जैसे था वैसे ही करके मैंने छोड़ दिया। मैंने देखना पड़ेगा क्या है वैसे कहाँ है। पता नहीं कहाँ बन रहा है सामान। Gotta check. Hi. यहाँ पे ये रहा। Alert. Insufficient power output. Alert. 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 What? Are you serious?
आ गया वो। हाल हो गया, इसमें भी दिमाग खराब कर रही है मेरा। सब क्या है इसकी हट। मुझे पावर चाहिए यहाँ पे, है ना। अब मैं पावर कहाँ से लेके आऊँ? यारी यारी पावर कैनाल। हाँ Alert! Insufficient power output. ये क्या है? What the fuck? भाई ये रुकता क्यों नहीं है एक जगह पे? दिमाग खराब।
Wait, what the hell is this? What? दिमाग खराब. लग क्यों नहीं रहा ये? क्या दिक्कत है इसको? क्या दिक्कत है इसको? हाँ ब्रदर, इसको एक एक पीछे करना है ना मुझे. भाई कहाँ कहाँ घुस रहा है ये इधर? इसको अब सही हो जाना चाहिए भाई, दिमाग खराब हो रहा है मेरा. क्यों नहीं लग रहा ये? मेन मशीन को हटा दूं? कौन सा मेन मशीन? आई थिंक ये बीच में ही रहेगा. ये जो देख रहे हो ना पूरा एकदम फिट है. बट क्या दिक्कत आ रही है, जो नीचे जो लाइन है ना, नीचे जो स्पेस है, जो मतलब जैसे होगा देखूं मैं, यहाँ पे ये फिट है, ठीक है, ऊपर की ऊपर पूरा फिट है, अंदर आ रहा है ना. बट ये जो बीच में हमारा मशीन है उसमें जो एरो है दोनों तरफ येलो येलो की, वो उसके अंदर फिट नहीं है. तो उसको फिट करने के लिए जब मैं उसको फिट करता हूँ लाइन दोनों तरफ, तो वो बाहर निकल जाता है दो, ठीक है. और यहाँ से अगर मैं देखूँ इधर से, तो इधर भी दो बाहर है. तो वैसे कि मैं इसको दो लाइन नीचे लेके आता हूँ. अब आई थिंक सही हो जाना चाहिए. अब नहीं हुआ सही तो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज.
अभी भी नहीं हुआ। ट्रांजिशन अब ये इधर बाहर आ गया है। कुछ भी। अब ये इस तरफ एक एक्स्ट्रा आया है क्या? नहीं नहीं, या इसको इधर लगाता हूँ तो ये एक्स्ट्रा इधर आ जाता है। अबे भैंस की क्या दिक्कत है ये? क्या करना है इसमें? क्या गलत हो रहा है ये? मुझे इसको ऐसे फिट करना है, राइट? मैं इतना नीचे आ गया भाई, अब तो हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ ना भाई, मैं गेम बंद कर दूंगा कसम से। अब ये आगे क्यों हो गया इतना? ओ भाई ओके ओके। अब क्या दिक्कत है? अब तो पूरा फिट हो गया इधर। अब इधर क्या दिक्कत आ रही है भाई? इधर भी फिट है पूरा। Cannot place due to regional placement limits of certain facilities. क्या? Of certain facilities? Regional limit? ये क्या होता है? अब तो पूरा फिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ओ भाई
Still waiting for something? हेलो बाय द वे, क्या हाल चाल? मैं मस्त, अपना बताओ। मैं बढ़िया। स्टोरी 1.5 घंटे की थी बस, ज़्यादा लंबी नहीं है। ओनली 1.5 आवर के आसपास की ही स्टोरी थी बस, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये इस दिन सिरिंज चाहिए इसको, धात्री भैंस की। अभी तक ये आया नहीं है इधर। Seriously, damn it. बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम है भाई, बहुत ज़्यादा ही बकवास, घटिया। What? What? बस वो नहीं है। बे ये सब क्या भरा हुआ है बैग में? भैंस की टेंट। हाँ, आई थिंक एरिया लेवल अप करना पड़ेगा पहले एरिया को, तब जाके होगा। Insufficient power output.
lessons she'll reveal. नींद आ रही है भाई, बहुत बोरिंग सा लग रहा है भाई आर्क नाइट।
योरे इसका है रात वीसी में आना मेरे से अकेले में नहीं होगा गाफर। भाई इतना भी डरावना नहीं है वो। मतलब अनलिमिटेड एमओ के साथ याद कर। अनलिमिटेड एमओ के साथ ही हालत करा है भाई। फिर सोचो अगर एमओ लिमिटेड होता फिर क्या करते हैं। अरे यार तो आज कॉलेज नहीं गए? हाँ कॉलेज भी नहीं गए। Didn't expect this, right? My special swordmancy for rocky stuff. अबे यार इसके नाटक अलग हैं। ये कनेक्टेड तो हो गया ना, इनसफिशिएंट पावर टीवी। पहले मैं पूरा एरिया ही कनेक्ट कर दूंगा इसकी, तब देखूंगा क्या है यहाँ पे। हालत खराब नहीं हो रहा, कहाँ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। नो 5 कॉलेज नहीं गया। अरे ये तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना, हम कैसे बता देंगे भाई, हमें खुद ना पता होगा। बहुत टाइम हो गया गेम खेले, ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई। ढूंढो, इधर उधर घूमते रहो, मिल ही जाएगा भाई। चेक करते रहो हर एक जगह। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को याद रखो, कहाँ पे क्या था, उधर था इधर था, तब जाके अच्छे से ढूंढ पाओगे चीज़ों को। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। ये कनेक्ट कहाँ से हो गया भाई इतनी जल्दी? अच्छा बगल में ही बेस है क्या? ओ बगल से ही कनेक्ट हो गया ये तो। पानी है इधर, जानबूझ के इधर उधर घुमा घुमा के ला रही। इनके चपेट पड़ना चाहिए खींच के। इधर जाओ उधर जाओ, हैं इसकी टैंक यहाँ खराब कर दिया। आई हेट गाचा गेम्स, ऐसे फिर भी गाचा गेम खेलना पड़ रहा है। कल का सही था भाई वो गेम, रेसिडेंट इविल खत्म भी हो गया भाई गेम 2 दिन में, है ना। इस ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो करो ये करो। अब इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मैं दिमाग खराब कर दिया है। मतलब ना मैं सामान वहां से यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर भी सकता हूँ तो 1 घंटे में 1000 सामान आएगा भाई के। भाई ये गेम बहुत स्लो चलता है भाई, लिटरली इन्होंने हर चीज़ को स्लो कर रखा है, कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा।
हद से ज़्यादा इन्होंने अबे क्या चाहिए मेरे को, ये भी नहीं है मेरे पास हट वेंस। वो स्पाइडरमैन का भाई मॉन्स्टर 2 बार आया और 2 बार ही चटका दिया। अच्छा वो छिपकली जैसा होगा, वो रेंगता होगा ऊपर नीचे, वो वाला बॉस। मैं अनलिमिटेड वाला रख के लिमिटेड एमओ का पिस्टल लेके ही खेल रहा था, बट जब से वो स्पाइडरमैन से आया तो मशीन गन उठा लिया वापस। मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा और स्टेलर ब्रेड किलोगे कैसे? स्काई इससे अच्छा ऑटो माइनिंग ही डाल देता। ऑटो माइनिंग क्या? मेरा फैक्ट्री का काम बस 1 दिन में हो गया था। मेरा भी हो जाएगा, बस थोड़ा सामान बनाना है। वो दिक्कत पता है क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है मेरे पास वो सामान नहीं है, क्या बोलते हैं, फेरियम पार्ट। मेरे पास फेरियम पार्ट नहीं है। अगर मेरे पास फेरियम पार्ट होता तो अब तक तो आएगा सब कुछ बिल्ड हो जाता। वो बस वो फेरियम पार्ट नहीं है, दो दैट्स द प्रॉब्लम। बस वो बन जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहिए मेरे को बस। अरे ये यहाँ रखूँगा तो आराम ही ये लोग ले लेंगे। यहाँ रखूँगा। पचास। ये बस बन जाए उसके बाद फिर अपना काम हो जाएगा। बस यही चाहिए मेरे को। ऐसे लेके जाना पड़ रहा है मुझे, बताओ ऐसे। जिन किस्में से बेड में ऐसे बेहुदे मॉन्स्टर एंड डार्क तो नहीं होगा ना, उस वजह से और फट रहा है। स्टेबल इससे थोड़ा सा टफ होगा, बट हाँ उसको इजी मोड पे खेल लोगे वो अलग बात है। बट हाँ ऑब्वियसली बात है, ये रेसिडेंट ईवल है भाई, इसके अंदर हॉरर इसके कोर में होता है, हॉरर एंड चीज़ें मैनेज करना। तो ऑब्वियसली बात है डार्क होगा, लोग इसीलिए तो खेलते हैं बिकॉज हॉरर होता है ये गेम में। जंप स्केयर हो जाएगा, कहीं से भी कुछ आ जाएगा, कहीं से कोई अटैक कर देगा, कुछ पता नहीं है कब कौन सा एनिमी आ जाए, कुछ नहीं पता। इसीलिए तो लोग खेलते हैं। एंड देखा जाए तो रेसिडेंट ईवल 2, 3 थोड़ा बहुत हॉरर है। रेसिडेंट ईवल 8 उतना कुछ हॉरर नहीं था उसमें बिल्कुल भी। लाइक हाँ एक को 2 जंप स्केयर थे बस, बाकी कुछ नहीं था उसमें। रेसिडेंट ईवल 9 में आई थिंक जंप स्केयर ज़्यादा होगा कंपेयर टू 8, और जितने ही मैंने खेले हैं। 2 में थे जंप स्केयर आई गेस, थोड़ा सा डरावना था, वो हॉरर था। 3 भी उतना नहीं था, 8 तो बिल्कुल ही नहीं है। 9 में हो सकता है थोड़ा सा वो हॉरर और डालेंगे गेम को अच्छा बनाने के लिए। मैं पूरा भर के ही जाता हूँ ऐसे। मेरे को बैटरी भी चाहिए ना, बैटरी भी चाहिए। हट गाइस,
थिंक इतना बहुत होना चाहिए. नहीं, I guess so. अरे डेटा बैंक तो बनाया ही नहीं है, माय गॉड. डेटा बैंक नहीं बनाया मैंने. डेटा बैंक, एनर्जी बैंक क्या बोलते हैं उसको? क्या चाहिए? ये चाहिए ना. ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से. व्हाट द फक. अरे ठीक है ना, चुप बैठ जा. Insufficient power output. No, 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 no. Alright. Okay. अब वो आ रहे नहीं आ रहे सामान मेरे. अरे यार ये कम कैसे हो गया? The fuck? What the freaking hell? वो क्यों नहीं आ रहा भाई? What? आ रहा है ना ये? हाँ आ रहा है. I guess अब सामान चलता रहेगा अपना काम. और क्या करना है हमको? कुछ करना है मुझे अब यहाँ पे. इसको एक्टिवेट करना है ना. हाय हाय. 9 में एक्चुअली devs try to keep it balanced. New MC plus experienced MC. ये मैं बोलता हूँ रेसिडेंट एविल सीरीज का फॉर्मूला न्यू MC इक्वल टू हॉरर, बट इफ MC गेट्स सीक्वल वो बस कॉम्बैट गेम बन जाता है. लेस हॉरर X RE2 हॉरर टू RE3 कॉम्बैट, RE7 हॉरर टू RE8 कॉम्बैट एलिमेंट. इनका ये क्या मर्द लेवल. ये 7 में सब स्टार्ट हुआ है, 8 में एंड जो 9 में भी रहेगा उसका रिजल्ट. नहीं नहीं, आई थिंक 9 कम्प्लीटली न्यू गेम है. 8 से उसका कोई रिलेशन नहीं है. सो हॉरर एंड कॉम्बैट दोनों हैं. वैसे कैसे किस पार्ट खेल रहे अभी लियोन? वैसे पता चला है इसका ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. यू हैव टू बिल्ड वुलिंग बैटरी और उसको
चढ़ा देना थर्मल बैंक में ऑटोमेटिक के लिए अमाउंट। अच्छा मैं लंच करके आता हूँ। हाँ ये तो मैंने जल्दी आई नो ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे को बिल्कुल मूड नहीं है भाई फैक्ट्री फुक्ट्री बनाने का। मुझे लग रहा है मुझे अपना अकाउंट किसी को देना पड़ेगा भाई। मैनेज करने के लिए। पानी से इनको एलर्जी है भाई बहुत। What the fuck? मैंने बनाया नहीं। बनाया तो था यार ये यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। मैं इसको बनाया तो ये चला कहाँ गया? ये यहाँ क्या कर रहा है? उल्लू के पटे। अब वापस से जाओ यहाँ पे। ओह माय गॉड डैम शिट डिस्ट्रैक्शन हूँ। वाह इसको देखो उसका है। शायद इतना मजदूरी नहीं करना पड़ता अगर बैटरी का बल्ब नहीं होता है पहले से। बैटरी तो मेरे दूसरे वाले बेस में भर भर के बैटरी है, बट यहाँ पे नया बेस है ना। अब मैं बैटरी यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र करूँ भाई? बताओ कोई तरीका है तो बताओ। मेरे पास कम से कम 15,000 के आसपास बैटरी होगी उधर। मैं यहाँ कैसे लेके आऊँ उसको? यहाँ कैसे लाऊँ भाई बताओ? कोई तरीका है इधर लाने का? वैसे देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेते हैं। इनकी रेंज बढ़ गई है मेरे को लगता है। श्राइनाइट क्या नाम है ये पाइलॉन की, इनकी रेंज ज़्यादा है आई थिंक। लाइक ये इतना दूर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। वहाँ पे पता नहीं कहाँ है एक खंबा सा, वहाँ पे है। तो लाइक ऑटोमेटिक लाइक आई थिंक ये जो पुराना मैप है उससे ज़्यादा बेटर है ये वाले इसके एरिया के। इसमें हमको लाइक खुद जाके कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक दूर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि बढ़िया है। वरना और दिमाग खराब होता। आई डोंट नो पहले भी ऐसा होता है या फिर इसी में नया चीज़ है ये, उतना मैंने नोटिस नहीं किया। हो सकता है कि ये लाइक पहले से ही हो, पिछले वाले मैप में भी हो, बट मैंने अभी डिस्कवर किया इस वाले मैप में। पॉसिबिलिटी इज़ हाई। पॉसिबिलिटी इज़ हाई। इस वाले एरिया में मैंने जितने भी थे वो सब तो कवर कर दिए मैंने। स्टोन्स और कोई स्टोन का एरिया है क्या? कुछ दिक्कत कहीं? स्टोन और तो नहीं है एक, है ना? या और कहीं नहीं है? और इधर है। अरे हाय कहाँ पे है? यहाँ पे है। बस 3 क्यों? 10 तो रख लो। 3 क्या?
स्काई एक काम करो, डेजी में जो जाओ उधर दोनों डिपोर्ट के साथ खुलते हैं, वुलिंग एंड वैली 4 का उधर से करो। अच्छा हाँ, वो सब तो मैंने भर लिया, अभी करता हूँ। अभी जाता हूँ, यहाँ पे फिट कर दूँ, उसके बाद जाता हूँ। क्या बोल रहे थे, देखता हूँ उधर क्या करना है। बताओ फैक्ट्रीज क्या? मेरा व्यू कैमरा लॉक हो गया। व्हाट? Only someone brought अब यहाँ पे मुझे टावर लगाना है। टावर यहाँ आसपास कहाँ पे? आई गेस यहाँ आसपास है ही नहीं वो टावर। दांत में इसके एनिमी से भरा हुआ है पूरा इलाका। ओके, अब मैं इधर जा सकता हूँ ना? मैं जिपलाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या इसको? कहाँ लेके जाएगा ये जिपलाइन मुझे? ओह इधर लेके जाएगा। बट यार मेरा तो टावर उस तरफ है। अरे यार हट पे। छे इधर जाना पड़ेगा। ये बीच सर्वर में कौन लगा के चला गया जिपलाइन? व्हाट द हेल? हाय, बीच सर्वर में कौन लगा के चला गया जिपलाइन यहाँ पे भाई? अरे इसकी रेंज दिख ही नहीं रही। चले चलो चले चलो चले चलो। अरे फैक्ट्री कहाँ है? व्हाट द हेल? चले चलो। अरे अटक गया। ओहो वे व्हाट द हेल? मैं अंदर नहीं आ सकता। व्हाट? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? भाई मैं इधर फिर जाऊंगा कहाँ से? इधर से जाना पड़ेगा। अबे यार घूम के जाओ है इसकी, घूम के। हाँ तो रास्ते ही नहीं है। बे हट। शायद इधर से लेके जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा ना। ये एरिया और बड़ा होगा तो उसको मैं
गया ना? यहीं कहीं पे टावर होना चाहिए वो। यहीं लगा दूं टावर एक। लग जाएगा। वाह, लग जाएगा भाई। हाँ, थोड़ा सा दूर हो गया नहीं, इसको उखाड़ के लेके आना पड़ेगा। यहाँ का क्या सीन हो गया? कनेक्ट हो गया, हो गया, हो गया, सब हो गया कनेक्ट। बट ये कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों? इनके बीच में दुश्मनी चल रही है क्या? व्हाट? ये है कनेक्ट तो हो तो गए भाई, फिर दिखा क्यों रहा है कि कनेक्ट नहीं हुई? हो गए ना कनेक्ट? हाँ, सब हो तो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्ट, बट ये नहीं दिखा रहा है। आई गेस कुछ गेम का इशू होगा। अब इधर जाना है मुझे। देन तो पावर के सब मुमाया है। इसका लुक याओ जैसा है, विद टीम अच्छा है। 300k जाएगा F2P टीम से, 200k विद फुल्ली F2P टीम, F2P शोर की विद सानुआ सेम 150k प्लस। एंड रोटेशन बहुत फास्ट है। ER CR अटैक चाहिए थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो याओ जैसा ही, राव जैसे ही भूले हैं उसे। चीसा जैसा अकाउंट ब्रिक ना करना। गेटिंग लुक इन ग्रांटेड पिटी विदाउट सिग्नेचर। ये लाइक रूल बांध लो, विदाउट सिग्नेचर कोई भी DPS पुल नहीं करना है। अच्छा ठीक है, सब DPS एक बार को चलेगा, बट DPS इज अ बिग नो भाई। विदाउट विदाउट DPS वेपन का DPS पुल मत ही करो, वो बढ़िया। ये हो गए, ये भी डन, ये भी डन। एक ये रह गया इधर। इधर कैसे जाऊंगा? हाय हाय, आओ मॉनिटरिंग सेंटर। मैं इधर से जा सकता हूँ? टैब वो खींच के। लेट मी चेक। वे यार तुम
और इनको बटन देना चाहिए कि भाई जितने भी ये प्लांट ग्रोथ वाले हैं सब क्लेम ऑल करके तुरंत क्लेम हो जाए। ये भैंस के ऐसे करना पड़ता है बार बार, यहाँ आके दिमाग खराब होता है तुम यार। ये छोटे छोटे एनिमीज को मारने में इतना टाइम लग जाता है ना भाई, दिमाग पावर नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है, पावर। ओए 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 ओए, ये ब्रिज क्यों नहीं? अच्छा उधर जाना पड़ेगा क्या? उधर से कनेक्ट होगा ये। चलो ठीक है, बाद में जाए, बाद में देखेंगे। बाकी हमारा एक स्टोन ये रह गया है, हाई प्योरिटी। ओह है अल्लाह, उधर जाना पड़ेगा अब। स्टिल बेटर देन वो करना चाहिए वैसे। बोला है दे विल ब्रिंग दैट वन क्लिक क्लेम ऑल बटन फ्रॉम स्पेसशिप इटसेल्फ। हाँ लेके आना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की, बहुत बेकार है उसके बिना ये। दैट्स एन इम्पोर्टेंट QTE। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ? भाई किधर है? इस तरफ? खत्म। चलो एक ये रह गया है ना, इसके पास भी ये लगा देता हूँ। हो गया? हो गया, नाइस। और कोई रह गया इधर आसपास? कोई जंगल फंगल में? ये हो गया, आई थिंक सारे हो गए, राइट। मार्क टेस्ट, क्लियर ऑल। एक ये हो गया, पावर्ड है, ठीक है ठीक है। ये पावर्ड नहीं है, यहाँ कैसे जाऊँगा? ये भी पावर्ड है, एक नहीं है उसमें से, चलो ठीक है। ये भी पावर्ड है, ये भी, और आई डोंट थिंक सो इधर है। एक ये रह गया है ना, इधर जाके लगा के काम खत्म। हेलो साल भाई, कैसे हो? अगर स्ट्रीम देव से बोला तो है देंगे 1.1 का वेट करो। आई गेस वेट ही करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। 1.1 में उस चीज़ का तो वेट होगा, बट इस चीज़ का भी वेट होगा
ये लोगों को कितने पुल्स देने वाले हैं? कितने पुल्स देंगे ये लोग 1.1 में? इसका भी वेट है भाई। Cat. वापस से जाता हूँ बुलिंग। अरे और किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे अब वहाँ पे? आई थिंक और किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। बैटरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ओ है ना, ये क्या चाहिए इसको? क्रिस्टोन पार्ट, ये क्या होता है? सोतुलू मॉड। हाँ रो दिया मैं यार। क्रिंज पीपल। मैं ऊपर वाला चैट देखो उसका। हिप्रोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। क्या हो गया? डेड गेम हो जाए एनफील्ड फिर पुल्स मैक्स कर देंगे लाइक हाउस हिजी गिव्स 185 प्लस पुल्स ऑन फिलर पैच। ओ हेल। अरे भाई आई गेस हो सकता है। देखो एंटी आएगा, अनंत आएगा, उसके बाद हो सकता है कि डेड पैच हो जाए, डेड गेम हो जाए। अगर ये डेड गेम हो जाएगा मतलब उतना अच्छा गेम है नहीं, या लोगों को उतना अच्छा इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर, तभी ये डेड होगा। ठीक है, हाउस लाइक जेनलेस जोन जैसा है उस तरफ। एक स्टार्टिंग में जेनलेस जोन लोगों ने बहुत खेला था, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे उसको ड्रॉप कर दिया। सो वही है, अगर जो अच्छे गेम्स आने वाले एंटी वो सब गेम्स अच्छे होते हैं तो हो सकता है कि फिर ये भी लाइक पुल्स देने लग जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भाई बोल ही जाओ, फिर पुल्स कम ही होंगे, ज़्यादा ना होने वाले। यहाँ से सब बना के ही जाता हूँ मैं। और क्या सब चाहिए हमको?
और कुछ भी चाहिए क्या? बाकी सब तो वहाँ पे बन चुका होगा। कितना है मेरे पास? ये प्लेसमेंट के लिए 5 है, ये 2 है। बना लेता हूँ इसके 16। इससे ज़्यादा की ज़रूरत तो होगी नहीं, बट जस्ट इन केस भर लेता हूँ सब। क्या चाहिए? ठीक है, ग्राइंडर भी चाहिए क्या हमको? दस ये ले लेता हूँ। और सारे मशीन तो मैंने ले लिए। ये मेरे पास कितने हैं अभी? 29 है। ये मेरे पास 10 हैं, ये 10 हैं, ये भी 7 एक ही है, 6 है। ये मोल्डिंग यूनिट, बैकपैक में इतना है। ये रिफाइनिंग यूनिट की ज़रूरत है क्या? ले लेता हूँ मैं इसकी, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। Who knows मैं इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बस बैकपैक में नहीं है ये स्टैच। 18 ये ले लेता हूँ। और कुछ की ज़रूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो। सब कुछ तो हो गया है, अब क्या करना है मुझे? आई मीन फैक्ट्री सिस्टम बिठानी है ना, फैक्ट्री सिस्टम बिठानी पड़ेगी। लेट्स सी कि अब सामान मेरे पास है या नहीं। अब अगर ये नहीं बैठा तो पता नहीं क्या दिक्कत है। अब तो ये लाइक बैठ जाना चाहिए ब्लूप्रिंट पूरा। आई होप सो, आई होप सो। यहाँ पे मुझे बैटरी बनानी पड़ेगी, राइट? क्या बोल रहा है ये? कैन नॉट प्लेस ड्यू टू रीजनल प्लेसमेंट लिमिट्स ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज। क्या प्लेसमेंट लिमिट मतलब क्या? क्या लिमिट है भाई? किस चीज़ की लिमिट है यहाँ पे? हाँ, तो नहीं है इसकी किस चीज़ की लिमिट लगा रखी है इन लोगों ने। अब बताएगा कोई? मुझे बता सकता है कि ये क्या बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला पता नहीं, लिमिट कुछ बताना ऐसी तैसी इस गेम की लिमिट से बोल रहा है कि लिमिट एक्सीड हो रहा है किसी फैसिलिटीज़ का या समथिंग ऐसा के मिशंस। अब मेरे पास सामान है तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ पता नहीं क्या फालतू नौटंकी कर रहा है ये गेम।
क्या दिक्कत क्या है भाई? I don't understand the problem here. I don't understand. प्रोटोकॉल कैपेसिटी ये क्या होता है? ये प्रोटोकॉल कैपेसिटी क्या होता है? हाँ 60 out of 250. भाई नहीं हो रहा भाई, साइज इंक्रीज करने से नहीं हो रहा। कर दिया मैंने इंक्रीज, साइज देख लो इंक्रीज कर चुका हूँ, स्टिल वो सॉल्व ही नहीं हो रहा भाई, इतना एरिया है। पता नहीं कोई बोला है कोई सर्टेन फैसिलिटी एक्सीड्स द पता नहीं क्या लिमिट विमिट बोल रहा है पागल गेम। ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, कैन नॉट प्लेस ड्यू टू रीजनल प्लेसमेंट लिमिट ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज। किस फैसिलिटी की बात कर रहा है ये? हाँ
नहीं तो न्यू फैसिलिटी टू डिस्कस करने बोल रहे वो येलो बलून फोड़ना आता है बोलते हैं आई गेस। हाँ वही करना जा रहा हूँ। ये लॉक क्यों है इधर? यार अब मैं जाऊँ कहाँ इधर से उधर? एकदम बेकार गेम है भाई ये, एकदम बेकार गेम। How the fuck am I supposed to go there? नहीं नहीं मम्मी ये बताओ भैंस की। ये गेम मेरा दिमाग खराब कर। नहीं दो चाहिए इसके लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दो चाहिए एक को अनलॉक करने के लिए। दो 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 दो। Bamboo gummies are back for a limited time.
Wow, I've never seen nice things like अब आई थिंक हो जाए काम अपना। अब अगर काम नहीं हुआ ना, मैं अभी बंद करके चले जाऊंगा। अब अगर ये काम नहीं किया तो भाई मेरा मेरा Insufficient power output. अब मैं इसको पावर कहाँ से दूंगा? हाँ, अब मैं इसको पावर कहाँ से दूंगा? Oh, my God, damn. आए, ये क्या लगा दिया मैंने? इसको एडिट कैसे करते हैं भाई? Oh my God. God damn.
बाय। कैसे कनेक्ट करूं मैं? The fuck? भाई I hate this system भाई। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इससे पहले ये बताओ मुझे। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये? क्या? इसकी भी लिमिट एक्सीड हो गई है? वाह, अच्छा ठीक है। और दूसरी कौन सी फैसिलिटी है भाई यहाँ पे? ये है ना? यार हट है इसका। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या? अब क्या? इसको लंबा करने के लिए कैसे क्या करूँगा मैं? अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है तो कोई तरीका है क्या इसकी रेंज बढ़ाने के लिए? और कोई तरीका है क्या? What am I supposed to do भाई? ज़्यादा इग्नोर करना पड़ रहा है अब। शायद दिमाग खराब कर रही है। इसका एक ही सफरिंग देखकर मुझे लग रहा है मैंने कोई दूसरा गेम खेल रहा हूँ। और एक बोस ऑफ वाइफोस आई डोंट फील दिस मच आई गेस। चलो हो गया अल्लाह। अब पावर अपने जी से सप्लाई होगा। अरे यार क्या किया जाए भाई? इन्होंने दिया भी है तो उसमें पावर सप्लाई का नहीं दे रखा है इन लोगों ने। पावर कहाँ से बनाऊँ मैं इसके में अंदर? और ये क्या है? इससे क्या होता है? What the fuck is this? क्या है ये? हाँ इनसे कुछ सामान आता जाता है क्या? ये है क्या? इसमें तो कुछ अलग ही है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा क्या है ये। भाई इसको ऐसे कहाँ से कनेक्ट करें? डोंट टेल मी कि मैं ये यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, वरना मैं अरे भैंस की
बट ये जाएगा तो स्टिल नहीं। मैं पानी इसको कैसे दूंगा? और कोई तरीका है क्या यहाँ पे पानी देने का इसको? फाइनली भैंस की टाइट हो गया। अब मैं पावर सप्लाई कैसे करूंगा? और ये चीज क्या है? डिफॉल्ट बस है ये, बट ये काम कैसे करता है? इसमें कुछ है भी नहीं जो ऐसे काम करे। ये ऐसे लगाना पड़ता है? अबे तो ये तो बाहर होता है ना एरिया के, ये अंदर लगाना पड़ता है। ये अंदर लगाना पड़ता है। अबे भाई मतलब इस बार हम इसे खुद ही क्राफ्ट करेंगे, खुद ही लगाएंगे। तो मतलब ये इन्होंने वो बना दिया पोर्टेबल, जहाँ तुम्हें ज़रूरत है वहाँ तुम इसे अपने आप खुद लगा सकते हो। ऐसा है ये। हाँ ठीक है, आई गेस हटा देता हूँ इसको फिलहाल। मैं बैटरी इससे सप्लाई कर सकता हूँ ना इसको, फिर क्या दिक्कत है? बैटरी आई कैन सप्लाई फ्रॉम हियर, या मैं बैटरी यहीं से बैटरी यहीं से बना लेता हूँ। व्हाट, दोनों साथ में ही काम करते हैं? अरे इनकी भैंस का। आई गेस इसको यहाँ पे तो इसको यहाँ लगा दूँ। हो गया। इसको स्टैच यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। इसके अंदर सप्लाई कैसे करूंगा सामान? इसमें तो कुछ है ही नहीं सप्लाई करने का भाई। इसमें सब सामान कहाँ से आएगा? ओ यार बैटरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। हाय 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 हाय। बैटरी कैसे बनती है?
अरे भैंस की ये भी इतना लंबा है। ओ भाई तो जूम आउट भी नहीं कर सकता मैं। और हाय हाय, और जूम आउट कैसे करते हैं? बल्क एक्शन। कट कर सकते हैं ना, कंट्रोल प्लस रेप्लिकेट मूव। अरे यार ये वहीं रहता है। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी। नहीं उसको ऐसे लगा पाऊंगा मैं। अगर इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ तो हो जाना चाहिए काम मेरा। नहीं, यस आई गेस हो जाना चाहिए। इसके लिए दिमाग खराब हो गया मेरा। और किसी कंट्रोल प्लस आर, ऐसे ऐसे। इसको मूव कैसे करूं मैं इसके साथ? अब सब वैली 4 का बैटरी अपने इन्वेंटरी में रख लो, फिर बुलिंग पे वहां से ही डाल दो भाई। क्यों हार्ड बना रहे? इन्वेंटरी में रखो कैसे? यहाँ से मैं कर सकता हूँ रीजनल ट्रांसफर से ऐसे ही। अब तो मेरे पास आ गया। तो ये इससे स्पेसशिप से कैसे होता है पता नहीं। आई डोंट नो। स्पेसशिप जाना पड़ेगा। वही स्पेसशिप, टेलीपोर्ट। ये क्या है? सैल्वेज, सिंगुलैरिटी, स्टॉक। कौन सा फंक्शन है? स्पेसशिप पे जाओ फिर बी बटन। अच्छा जाता हूँ। हेलो शोभन भाई कैसे हो? ऐड मी इसका है। अच्छा अच्छा ऐड कर दूँगा। मुझे आईडी भेज देना बाद में। ओ अच्छा हाय। क्या करूं? टेलीपोर्ट कैसे करूंगा? आई मीन कैसे करूं? कैसे क्या? यहाँ पे तो बैकपैक आ गया मेरा। तो मतलब डिपोर्ट से अपने बैकपैक में लूं, फिर बैकपैक से वहां ट्रांसफर करूं ऐसे? अच्छा ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है आई गेस। ये क्या है? क्या क्या है सब है भाई? पहले हटा हट। वेयर इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। क्या फेंक दिया इसने नीचे? ये सब बाद में ले लूंगा। बैटरी कहाँ है मेरी? बैटरी बैटरी बैटरी। अबे मेरी भी है।
हो गया? अबे तेरी भैंस की। मैं डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसे करके करना पड़ेगा मुझे। ये स्टैश हो जाएगा भाई। इससे क्या होता है? आया ना ना, स्टार्ट नहीं करना। डायरेक्ट बैकपैक में नहीं जा सकता। कि लाइक सेलेक्ट कर लूँ एंड वो सारा सामान तुरंत चले जाए ऐसे ही। आई गेस नहीं है कोई फंक्शन ऐसा। हाथ से करना पड़ेगा। ये लो। उसके बाद ये जो है गियरिंग यूनिट, आई मीन इसका कोई काम नहीं है, इसको भी यहीं रख दो और उसको ये भी डाल दो इधर ही। प्रोटोकॉल स्टैश भी इधर ही रख दो बस के। और ये गियरिंग यूनिट है। स्काई लेफ्ट क्लिक से शिफ्ट से फास्ट हो जाता है। चेक किया अच्छे। आ गया लेफ्ट क्लिक शिफ्ट। क्या क्या? क्विक स्टैश को ही बोलते हैं। मेरा सामान तो नहीं चले जाएगा? अच्छा इधर आ गया। आ गया ओके। आई थिंक बहुत होगी, इतना और ले जाओ। क्या लेफ्ट क्लिक प्लस कंट्रोल नहीं हो रहा? तो 25-25 करके आ रहा है भाई। ऐसे समझ गया। हाय हाय स्टैश 2000 बैटरी चल जाना चाहिए अपना काम इतना तो।
इनमें क्या क्या जाएगा वैसे? ओरिजिनियम डेंस पाउडर। हाँ, मेरे पास है ये। Zero. Why is it zero? Why? I wonder. ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे सेटअप तो कर दिया था मैंने। क्या दिक्कत है यहाँ पे? कैसे लगा मशीन भाई? ये इधर जा रहा है, इसका आउटपुट फिर जा रहा है किधर? इस तरफ, और इसका आउटपुट इधर जाना है ना। दूसरा क्या चाहिए इसको? ओके, इसको क्या चाहिए था? सैंड, क्या चाहिए था इसको? आगे सैंड लीफ चाहिए इसको ना। मेरे पास होगा ही नहीं। सैंड लीफ वो क्या होता है? अरे इसकी सैंड लीफ लेके आना पड़ेगा। सैंड लीफ है क्या मेरे पास? नहीं है। क्या पता बैग में हो। नो, वुलिंग जाना पड़ेगा। आई मीन ये क्या नाम है? डीजेंग। मेरा दिमाग घूम चुका है भाई इसके चक्कर में। लिटरली मेरा दिमाग घूम चुका है। भाई इसके सामने आ रही एट तो कुछ नहीं था। डैम, दिमाग का दही हो गया मेरी। ले पूरा ही भर दिया इसे तो। I guess we don't need much, but just in case ले जाता हूँ थोड़ा सा। और क्या चाहिए होगा हमको? डेंस, ये तो मेरे पास है ही ना पहले से ही। ठीक है, इससे ये किससे बनता है? अबे कहाँ गया भाई? अरे डेंस ओरिजिनल पाउडर चाहिए ना, मैं यही लेके जाके भर देता हूँ उसके अंदर। बन जाएगा अपने आप। नहीं आई गेस और कुछ लेके जाना है मुझे यहाँ से। कोई मशीन, सब में से रिफाइनिंग यूनिट ले जाता हूँ, वहाँ जाके रख दूँगा। और ये भी ले आता हूँ। ये हो गया फिलिंग यूनिट, ये वाला यूनिट,
और कुछ ग्राइंडिंग यूनिट, गियरिंग यूनिट, और कुछ आई गेस नहीं चाहिए। आई थिंक हो गया आई गेस अपना काम। फिर स्टोन कंपोनेंट है मेरे पास। कार्बन है ये, इसको भी लेके जाता हूँ। आई गेस थोड़ा सा ओरिजिनल पाउडर रख लेता हूँ, 50 ये हो गया ना। स्विच डिपोट, वुलिंग, इधर आओ एंड देन क्विक स्टैश। खाली हो गया, तो भी जा इधर। और कुछ है इधर? नहीं। और क्या सब रखना चाहिए? यही चाहिए ना हमको, डेंस ओरिजिनियम पाउडर है ना। और मेरे पास है ये इतना सारा, रख लेता हूँ। आई गेस काम आ जाए, क्या पता। और कुछ चाहिए मेरे को? डेंस ओरिजिन क्रस्ट है ये, क्रिस्टोन है ये, स्पेरियम पाउडर है। और कुछ तो नहीं चाहिए मेरे को। Yeah, I guess सब हो गया। I hope so. अब जाता हूँ भाई। अब कुछ रह गया होगा ना। इधर नहीं, किधर? इधर। बक फ्लावर चाहिए। को बताइए। इसमें लगाना है मुझे। ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे सीड डालना पड़ेगा ना, तो ये वाला है ना। कहाँ गया? हो गया ना। इसको क्या क्या चाहिए? बना क्या रहा है ये ना? ये बना रहा है। और ये क्या बना रहा है? आई थिंक यही बना रहा है। ये भी वही बना रहा है। कार्बन पाउडर कौन बना रहा है यहाँ पे? आई डोंट नो। ये भी वही बना रहा है। ओके, सब वही बना रहे हैं। ओके ओके, गॉट इट, गॉट इट। आई ये तो चल गई, ये तो चल गया है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? ये पैकेजिंग यूनिट है। ये फॉर्ज ऑफ द स्काई। यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं? आई गेस हम बैटरी बना रहे हैं ना। बैटरी बना रहे हैं हम, बैटरी। तो इसके अंदर जाएगा ये। यस, आई थिंक इसके अंदर भी जाएगा ये, एंड इसके अंदर भी जाएगा ये, है ना।
और ये कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग यूनिट में है ना, रिफाइनिंग यूनिट में। यहाँ क्या डालना है? समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। कोड ये देखना पड़ेगा फिर से, क्या डाला था इसने। एंटविल खेल के थोड़ा बहुत ज्ञान तो आता है फैक्ट्री का। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। मैं सैंड लीफ से भी तो नहीं, सैंड लीफ से नहीं बना सकता क्या मैं अपना कार्बन? सैंड लीफ से भी तो कार्बन बन सकता है आई गेस। ठीक है आई गेस, यहीं से बना लेंगे हम। पूरा ही भर दिया इसने तो। आई गेस हो गया काम खत्म। अब चलता हूँ बोलिंग। ओके, अब किसमें क्या जाएगा भाई ये बताओ पहले तो। मैं इसकी रिफाइनिंग यूनिट में ये गया इस तरफ से गया इस तरफ। हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? आई थिंक ये बना रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर जाएगा ये ओरिजो क्रस्ट। क्या चाहिए इसको भाई? हाँ, यहाँ क्या लगाना है? क्या बनाना क्या है यहाँ पे?
फिर शॉर्टकट कीज याद नहीं, 2 वीक्स अगो ही कर लिया था ये सब, हाथ नहीं लगाया फिर। सोनेट कंपोनेंट नीड्स फॉर गोल्ड गियर बाय द वे। हाँ वही तो बना रहा हूँ मैं। इसमें बन तो रहा है ये। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या जाएगा इन दोनों में से। ये जो दो हैं इसमें से क्या मेरे को भेजना है इसके अंदर, यहाँ पे क्या भेजना है वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। होय 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 होय। Forge of the Sky होय। समझ गया। तो इसके अंदर मुझे जो भेजना है शेडिंग यूनिट है ना, ये इसके अंदर मुझे भेजना है पत्थर। आई थिंक अब हमारा बन चुका है पूरा बेस कंप्लीट डन गैस की टैट बढ़िया से। हमारी बैटरी बनती रहेगी है ना। तो मेरे पास बैटरी आई क्या यहाँ पे? एक ही बैटरी बनी अभी तक। व्हाट, बैटरी नहीं बनी अभी तक एक भी? हाँ
क्या नाम था उसका? शेराइट बैटरी, क्या बोलते हैं उसे? कौन बनाता है शेराइट बैटरी? ये बनाता है ना? हाँ यही तो बनाना है हमको। तो इसके अंदर क्या चाहिए? वाटर, वाटर नहीं आ रहा क्या? तत पाइप, ब्रिज, ब्रिज लगाना है मुझे, स्प्लिटर लगाना है ना। हो गया भाई काम। Ugh. 1600 पावर देता है ये सिंगल बैटरी। शिट। आई गेस मेरे पास अभी स्टॉक है ना 200 या 2476 का स्टॉक है मेरे पास। ओके भाई ठीक है, अब बाहर चलो भाई, इसके बाहर भागो, हट। अब मैं जाता हूँ डिजांग में, यहाँ पे बताओ भाई क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। 6 बज गए। श्राइड कंपोनेंट नीड्स फॉर गोल्ड, वो पता चलता है ब्लूप्रिंट सेक्शन जाओ। अभी इधर आ गया, मैं जाता हूँ। प्लास्टिक को व्हाट, एक सेकंड। यहाँ पे मैं वो एक सेकंड, मैं अपना वुलिंग का स्टॉक बिल्स कैसे बढ़ाऊँ? उसके लिए मुझे वहाँ का ये इलास्टिक गुड्स अनलॉक करना पड़ता है क्या? ये क्या बात है? ये लाइक यहाँ पे क्यों दिखा क्यों नहीं रहा है ये? भाई कितनी महंगी महंगी चीजें हैं यहाँ पे। 16 मिलियन की बाइक है ओ भाई। Hello. Where should we go next? Disappointing as hell. well, अगर आया हूँ तो सामान बेच के ही जाता हूँ इधर से। क्या सस्ता चल रहा है भाई? 3000 का है ये, 3400 का है ये, 3600 का। आई गेस ये वाला था ना, 3400 का है ये हाईएस्ट, 3600, ये 1400 का है, ये 3 का है। आई गेस यही परचेज कर लेता हूँ। व्हाट, जिन्स काखाई के पास जाना पड़ेगा मुझे। उधर का ऑन करो, वही तो भाई, इसी में यही दिक्कत है, पहले यहाँ का करो फिर वहाँ का करो, यही करते रहो भाई इसकी बस।
यही करते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, यही काम रह गया हमको बस। अब तो लाइक छोड़ सकता हूँ मैं, अपने आप चलता रहेगा ना काम तो, है ना। और कुछ करने की जरूरत है मुझे यहाँ पे। मुझे बैटरी बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ताकि रीजनल लेवल को मैं लेवल अप कर पाऊँ। 1,60,000 चाहिए भाई इसको अनलॉक करने के लिए। अब मेरे पास 3700 ही है बस। अरे वैसे ये क्या है, या ज़ेन सिरिंज। ये कैसे बनाते हैं? और कोई तरीका नहीं है कहीं से ये लेने का? आई गेस नो अदर वे, वेट करना पड़ेगा आई गेस, है ना। Got it, Edmin. Actually, I was just wondering what took you so long to assign me a task. I saw. आई गेस अब वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। क्या बाय द वे सिलेक्टर से पॉक क्यों नहीं लेता? लाइफैंग इज बेस्ट टीममेट। मैं दूसरे मैप में है वो सेकंड बेस के पास। कहाँ पे? कहाँ पे है ये?
फॉग स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बोलते हैं, वैसे भी खेलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, फास्टर देन लास्ट राउंड। अच्छा, फॉग उसका वेपन भी तो चाहिए, बिना वेपन के वो काम भी तो नहीं करेगा ना। एलिस ओवर्ल्ड में तो पेल देगा ब्रह, एंड गेम थोड़ी ना करना है। सेलेक्टर से सब यूज कर लिया क्या? यस। वाह, यस, वाह वाह। तेरा भी बीपी का सिलेक्टर, मेरा अभी भी है बैटल पास का सिलेक्टर। ओह, यार ये सब लाइक वहाँ जा के क्लिक करना पड़ता है, ठीक, which is just too much. पॉक बेंच पड़ा इवनिंग के लिए लेने वाला था बट कर दिया, 20 पुल आ गया वेपन, सो सेव करा अब। अच्छा, इवोने का वेपन आ गया, डैम, 20 पुल में ही। सही है भाई, इवोने का वेपन।
मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? लोल, मैंने नहीं देखने वाला प्रूफ। लेवी कार2 वेपन के लिए भी यही बोले थे। लेवी का R2 वेपन हो गया है। डैम, कहाँ जाना है इधर? Something ain't right. Watch your step, people. Leave it to me.
इसका जिनमें का चैट बैक रीड करो और बोलो मैं सही समझता ना। क्या कौन सा चैट रीड करूं? मुझे लगता है आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा था। लोल मैं नहीं दिखाने वाला प्रूफ। लेवी का R2 वेपन के लिए भी यही बोले थे। मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा, इसमें क्या प्रूफ, खुद ही बोला था। तुमने स्टार्ट किया। हाँ तो वेपन नहीं मिला बोले थे ना, वह झूठ बोला उनको नहीं मिला। कब? डिस्कॉर्ड में अभी स्क्रीनशॉट है मेरे पास जहाँ मैंने बोला था वेपन मिल गया। Beautiful sounds. अच्छा ये बोले जिन भाई बोल रहे हैं कि वेपन कब मिला हैं? अच्छा ये बात है क्या? बढ़िया है भाई, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है भाई, मुझे तो नहीं मिलता। मुझे कब मिलेगा कुछ, पहले ये बताओ। मुझे कब मिलेगा? Danger up ahead. क्या को अपना खुद का रोना है भाई, वो क्या जज बनेगा? और नहीं तो क्या मैं क्या ही जज करूं भाई, मेरा तो खुद ही नहीं मिल रहा कुछ। किधर जाना है मैं इसकी? तो लेवल अप हो जाएगा ना वो डीजेंग हैं? अभी भी कम है अबे भैंस की। You cannot be serious भाई। हो गया भाई, अपना काम खत्म हो गया।
बंद कर देता हूँ अब मैं, बहुत हो गया भाई। फिनिश्ड। Am I looking all right from this? Will others get to see these fights? Some might recognize my lance. It's probably best if they don't know my name. हेलो नर भाई, क्या हाल है? क्या करो 10 पुल घंटा। चलो चल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। गुड नाइट, गुड इवनिंग, टेक केयर। मिलता हूँ अब अगले स्ट्रीम पे। बाय बाय।